पिक्चर देखो, पिक्चर देखो, अरे पिक्चर देखो। रदरफोर्ड किस रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड नहीं तो बोला था अपने स्टूडेंट्स। ओके पिक्चर देखो, पिक्चर देखो, अरे पिक्चर देखो। You guys are getting confused.
मैं मुझे ही गायब करनी फिर तो, है ना।
क्या पढूं क्या ना पढूं कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। तो मैं क्या पढूं क्या ना पढूं बताओ। आज मैं थोड़ा लेट गई ना, मुझे लगा तुम लोग गाली दोगे लेकिन किसी ने गाली नहीं दिया। हो गई क्या पढ़ाई। तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? स्टार्टिंग एट 10:30 AM लिखा है। Sarvajita, are you there? कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन ऐसी गलतफहमी ना पालो कि तुम एक स्लॉट में 12th तक पढ़ पाओगे। 10 से 12 तक पढ़ सकते हो लेकिन 10 से वो वाला 12 तक नहीं पढ़ पाओगे। हाय तरुण, हम लोग भी स्टार्ट करते हैं है ना, स्लॉट 1 करके। स्लॉट 1 आई थिंक भवा और सर्वजिता आई थी, बस सर्वजिता आई थी शायद। मुझे भी नहीं पता, पता नहीं ऐसा क्या। हाँ वही तो, मैं ना टाइमर लगाना ही भूल गई थी। देखा, मुझे लगा था कोई ना कोई तो डांटेगा। नहीं नहीं, बाइनरी तुमने सही लिखा है, मैंने AM PM नहीं देखा। अगर तुमने 12 PM लिखा है तो सही था, AM नहीं होता है, PM ही होता है। 2 घंटा पढ़ने वाली हो ना कंटिन्यूसली। लेकिन मैं लेट सोई थी, आई थिंक मैं 5 के अराउंड सोई। नींद खुली थी 8:30 के आसपास, लेकिन मैंने सोचा कि अब आ रहे 30 मिनट है तो क्यों 8:30 पे ही उठूं। मैंने सोचा क्यों, मैं सोते गई। 1 2 3 4 5 हार्डली 5 आवर ही तो कंप्लीट हुआ है। वो कॉफी के कारण था शायद। आई थिंक अभी स्टार्ट करना चाहिए ना। मैं मेंशन देती हूँ स्लॉट 1 लिख के, कि मैंने लिख दिया पहले ही। हाँ लिख दिया है, पिन कर देती हूँ। तुम भी अभी उठे हो ना, एक्टिंग कर रहे हो मेरे सामने। पहले उठने का एक्टिंग कर रहे हो ना। हाँ, क्यों ना बुक से ही पढ़ा जाए। आउट ऑफ पेंसिल आया तो आगे का देख लेंगे। नहीं, मैं आया था 9 था,
आया 9-10 पे, but you were not here. Okay, I trust you. लेकिन तुम झूठ भी तो बोल सकते हो, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्रस्ट कर दी. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लो ना आज प्लीज. Reproduction and evolution करना. Human reproduction and evolution. ट्रस्ट तो करना पड़ेगा. सच्ची में करना पड़ेगा. निशांत, are you there? Genesis. Do you ever you will study with us, or you'll study from somewhere else? Like you will turn off the light and then you'll study. हागू पीछे से, हागू IAS पीछे से भी लिखना था. बस AIR1 लिख दिया. पीछे से कौन लिखेगा? Yep, asking you. I think my friend didn't came. सर्वजीता तो थी लेकिन अभी नहीं है. सर्वजीता, are you there? They all went to study or something like that. I don't know. Will you study? Wherever. Sure, I'm studying. No, I mean you are going to study with us while attending the live. Or you will watch video lectures from your phone or PC. Okay, good luck everyone, okay? 10:30 हो गया है. तो let's start. Hagu, I'm not preparing for an UPSC. तो अगर तुम मुझे पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछ रहे हो तो मेरा खुद ही नहीं था पॉलिटिकल क्लास 10 के बाद. हाय अभिषेक, अभी बात करने का टाइम नहीं है, बाय. अभी पढ़ना है. वेट अभिषेक. नो आई समथिंग एल्स था इसका. I'm starting the timer, okay? Good luck for the first session. Good luck all. As you are aware, humans are sexually reproducing. Viviparous. The reproductive events in human includes formation of gametes, gametogenesis, that is, a sperm in male and ovum in female, transfer of a sperm into the female genital tract, insemination. Okay? Ovum in female, transfer of sperm into the female genital tract, insemination, and fusion of male and female gametes, fertilization, leading to the formation of zygote. This is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, implantation, embryonic development, gestation, and delivery of the baby, parturition. You have learned that the reproductive events occurs after puberty. You have learned that these reproductive events occurs after puberty.
There are remarkable differences between the reproductive events in males and in females. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. System in humans. गुंजन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट की अब, लेकिन अभी ना टेक्स्ट मत करो, ओके? इट्स गुंजन और गजानन. देखिए मैं ऑफ ही कर देती हूँ चैट्स मेरे. The male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. एक मिनट यहाँ पर से. हाय एलेक्स, गुड मॉर्निंग. लेकिन मैं अभी चैट्स ऑफ कर दे रही हूँ, ओके? नहीं, मयूर नहीं पहचाना, लेकिन मयूर नाम सुना सुना सा लग रहा है. ये लो, मैंने चैट्स ऑफ कर दिया. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, and external genitals. The reproductive system is located in the pelvis region. Kani lansa pelvis region lansa. It includes a pair of testes along with accessory ducts and glands, external genitals, external genitalia, external genitalia, testes, a pair of testes along with accessory ducts, and glands, okay? इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, it's okay. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, and external genitalia. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, and external genitalia. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, the external genitalia. Accessories, ducts, glands, and the external genitalia. A pair of testes, external
and accessory ducts and glands. Accessory ducts and glands. Okay, the testes are situated outside the abdominal cavity within the pouch called scrotum. Testis, testis, testis. Okay, situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the human internal body temperature. 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature. Scrotum, scrotum. Okay, in a pouch called scrotum. Necessary for spermatogenesis. It is necessary for spermatogenesis. In adult, each testis is oval in shape with a length, okay, oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. Figure 2.1b. Diagrammatic view of male reproductive system. Part of testes is open to show inner details. Okay, testicular lobules. Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. Each testis 250 compartment called testicular lobules, or each testis equals to 250 testicular lobules. Oval in shape, length 4 to 5 centimeter, breadth or width 2 to 3 centimeter, width 2 to 3 centimeter, length 4 to 5 centimeter, width 2 to 3 centimeter. Testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Okay, each lobule contains 1 or 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubules is lined each lobule, पता नहीं कैसा हो रहा है. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Okay. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cell, spermatogonia, and Sertoli cell. Figure 2.0. Diagrammatic sectional view of seminiferous tubules. Each testicular lobule. Each testicular lobule contains 2 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Okay, this is sectional view of seminiferous tubules. Interstitial cell, Leydig cell, Spermatogonia, sperm mother cell, spermatozoa, spermatogonia, sperm mother cell. Okay, spermatozoa. Interstitial cell, Leydig cell, releases androgens, testosterone. Interstitial cell, Leydig cell, releases testosterone. Now releases androgen, which further releases testosterone. Leydig cell or interstitial cell. Spermatozoa भन्दाखेरि के भन्छ sperm mother cell. Spermatogonia भन्छ. Sperm mother cell के भन्छ spermatogonia. Spermatogonia. Then we have a spermatozoa. Sertoli cell. Sertoli cell for nutrition. Sertoli cell. Then spermatogonia for finally spermatozoa. Okay, sperm cell. Sertoli nurse cell. Interstitial cell or Leydig cell. Each lobule contains 1 or 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called
Male germ cell, spermatogonia, male germ cell and Sertoli cell. The male germ cell undergo meiotic division. Meiotic division. The male germ cell undergo meiotic division. Male germ cell, spermatogonia. Okay, undergoes meiotic division, finally leading to sperm formation. While Sertoli cells provide nutrition to the germ cell, finally leading to the sperm formation. While Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Male germ cell, spermatogonia. The region outside the seminiferous tubules called interstitial space contain small blood vessels. Okay, wait. 1, 2, 3. Seminiferous tubules. The region outside the seminiferous tubules called interstitial space. Interstitial space. Given line interstitial space contains small blood vessels and interstitial cell or Leydig cell. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgen. Other immunological competent cells are also present. Okay. Interstitial cell मा के हुन्छ interstitial space मा Leydig cell हुन्छ जसलाई interstitial cell पनि भन्छ. Interstitial space मा के हुन्छ interstitial cell or Leydig cell along with the small blood vessels. Okay, along with the small blood vessels. Leydig cell synthesize and secrete testicular hormone called androgen. Leydig cell synthesize and secrete. Synthesize and secrete testicular hormone called androgens. Okay, androgens. Androgens एउटा type है testosterone. Okay, छोड़ो अभी. Leydig cell secretes and synthesize and secretes androgens, testicular hormone. Leydig cell synthesize and secrete testicular hormone called androgen. Other immunologically competent cells are also present. The region outside the seminiferous tubules called interstitial space contains small blood vessels and interstitial cell or Leydig cell. The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to the sperm formation, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. The region outside the seminiferous tubules called interstitial space contains small blood vessels and interstitial cell or Leydig cell. Okay, pelvis region मा हुन्छ है. मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कहाँनिर हुन्छ पेल्भिस रिजनमा. मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पेल्भिस रिजनमा हुन्छ. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल जेनाइटल्स, त्यहाँदेखि पेयर अफ टेस्टिस, accessory ducts along with accessory glands. यो चारवटा कुरा हुन्छ के. त्यहाँदेखि टेस्टिस बाहिरपट्टि हुन्छ स्क्रोटममा. ह्युमन बडीदेखि बाहिर किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल टेम्परेचर भन्दाखेरि अलिक कम्ती टेम्परेचर चाहिन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस को लागि है. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम्ती चाहिन्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रोटमको लेन्थ हुन्छ 4 to 5 सेन्टिमिटर आई गेस, और विथ हुन्छ 2 to 3 सेन्टिमिटर. 4 to 5 सेन्टिमिटर एन्ड विथ 2 to 3 सेन्टिमिटर करेक्ट. अनि के भुलिँदैछु मैले. ओके, टेस्टिसलाई के कभर गरेको हुन्छ डेन्स कभरिङ. टेस्टिस इज कभर्ड बाई डेन्स कभरिङ इच टेस्टिस. ओके, एउटा टेस्टिसकोमा 250 वटा 250 वटा के हुन्छ कम्पार्टमेन्ट हुन्छ.
यो कम्पार्टमेन्टभित्र पनि एउटादेखि 3टासम्म हाइली कोइल्ड सेम्निफेरस ट्युब्युल्स हुन्छ। सेम्निफेरस ट्युब्युल्सको क्रस सेक्सनमा हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, भित्रपट्टिबाट यसलाई 2टा सेलले लाइन गरेको हुन्छ। एउटा हुन्छ मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेलले यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेल जर्म सेल र सर्टोली सेल हुन्छ। सर्टोली सेलको नाम नर्स सेल पनि हो। त्यसै कारणले के गर्छ, डेभलपिङ स्पर्मेटोजोआलाई के गर्छ, न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ। वेराज मेल जर्म सेलले यसलाई स्पर्म मदर सेल पनि भन्छ, मेल जर्म सेललाई, या फिर स्पर्मेटोगोनिया पनि भन्छ। यसले के गर्छ, स्पर्मेटोजोआलाई प्रोड्युस गर्छ, स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेलमा कुन चाहिँ डिभिजन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेल जर्म सेलमा मियोटिक डिभिजन हुन्छ। मियोटिक डिभिजन हो कि फर्स्ट डिभिजन के छ, मियोटिक छ। मियोटिक डिभिजन दिएको छ यहाँनिर। अहिले अरू त फर्दर त गएर हेर्दा थाहा पाउँछ। फाइनली लिडिङ टु स्पर्म फर्मेसन। ओके, मियोटिक डिभिजन भएर के गर्छ, स्पर्म फर्मेसन हुन्छ। वेराज इन्टरस्टिशियल स्पेस पनि हुन्छ। सेम्निफेरस ट्युब्युल्सको बिचमा ग्याप हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, इन्टरस्टिशियल स्पेस भन्छ। इन्टरस्पेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड भेसल्स हुन्छ, स्मल ब्लड भेसल्स हुन्छ। अलङ विथ ब्लड भेसल्स यसमा यो पनि हुनसक्छ, के भन्छ त्यसलाई, लोले, याद कर बहन, याद कर। आई थिङ्क लेडिक सेल्स हुन्छ, जसलाई इन्टरस्टिशियल सेल भन्छ। लेडिक सेलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सिक्रिट पनि गर्छ, सिन्थेसाइज पनि गर्छ एन्ड्रोजन, टेस्टिकुलर हर्मोन। ओके, द्याट्स इट। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgen, or the immunologically competent cells are also present. All cells are present. Immunologically competent cells are present. Okay, that's it. The male sex accessory duct include retitestis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. The male sex accessory duct. Okay, accessory ducts. अघि डक्ट्स भनेको थिएन, यहाँनिर के छ, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेन्सिया, इपिडाइडमिस र वास डेफरेन्स छ। के रेटी भनेको के भन्दा नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स र नर्भ्स। वासा भनेको ट्युब द्याट क्यारिज फ्लुइड। वासा ट्युब द्याट क्यारिज फ्लुइड, नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स र नर्भ सेल्स। रेटी भनेको नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स र नर्भ सेल। ब्लड भेसल्स या फिर नर्भ सेलको नेटवर्कलाई के भन्छ, रेटी। नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स र नर्भ सेल नभए ब्लड भेसलको नेटवर्कलाई के भन्दो रहेछ, रेटी। ओके, अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वासा भनेको चाहिँ जसले फ्लुइड क्यारी गर्छ, त्यो ट्युबलाई के भन्छ, वासा भन्छ। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इन्क्लुड रेटिटेस्टिस, वासा एफरेन्सिया, वास डेफरेन्स एन्ड वास डेफरेन्स। रेटिटेस्टिस, वासा एफरेन्सिया, वास डेफरेन्स र रेटिटेस्टिस, वासा एफरेन्सिया, वास डेफरेन्स र कितना जल्दी भूल जाती हूँ ना मैं। रेटिटेस्टिस, वासा इपिडाइडमिस, वासा एफरेन्सिया, वास डेफरेन्स र इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस एन्ड वास डेफरेन्स। फर्स्टमा के हुन्छ हाम्रो रेटिटेस्टिस, देन वास एफरेन्सिया, epididymis, and finally vas deferens. Retitestis, vasa efferentia, retitestis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. Coiled tube carries sperm. Okay, vas deferens. Order याद गर्नुपर्छ। फर्स्टमा को हुन्छ retitestis, then retitestis, vasa efferentia, then epididymis, vas deferens. Vas deferens, difference. This seminiferous tubules, okay. Retitestis, please याद कर लो। Retitestis हुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा। रेटिटेस्टिसबाट जान्छ वासा एफरेन्सियामा, वासा एफरेन्सियाबाट एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिसबाट मात्रै वास डेफरेन्समा जान्छ। के रेटी भनेको नेटवर्क अफ नर्भ सेल्स और ब्लड भेसल्स, नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स और नर्भ सेल, नेटवर्क अफ ब्लड भेसल्स और नर्भ सेल्स। वासा भनेको ट्युब दैट क्यारीज फ्लुइड, ओके। The seminiferous tubules of the testes open into the vasa efferentia through retitestis. Seminiferous tubules, जुन चाहिँ हाम्रो अघिको seminiferous tubules को फिगर देखेको थियो, त्यो चाहिँ कहाँनिर खुल्लिन्छ, फर्स्ट रेटिटेस्टिसमा खुल्लिन्छ, त्यसको बादमा केमा खुल्लिन्छ, वासा एफरेन्सियामा।
vasa efferentia kulincha. Okay, vasa efferentia leaves the testis. Okay, vasa efferentia बाट नै के हुन्छ, टेस्टिसलाई छोडेर जान्छ vasa efferentia ले र कहाँनिर गएर खोलिन्छ, एपिडाइडमिसमा. एपिडाइडमिस टेस्टिसको पार्ट हैन ल, यसलाई छोडिकिन गयो, टेस्टिसबाट त निस्क्यो, को निस्क्यो, vasa efferentia. It's okay ma. Leaves the testes and open into epididymis located along the posterior. ये वो टेस्ट में आया था ना, मैंने गलत किया था. The vasa efferentia leaves the testes and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The seminiferous tubules of the testes open into vasa efferentia through rete testis. The vasa efferentia leaves the testes and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. ये वाला पोर्शन देखो तो, the seminiferous tubules of the testes open into the vasa efferentia through rete testis. The vasa efferentia leaves the testes and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. Anterior, posterior, पिछाडिपट्टि हो, posterior surface में epididymis कहाँनिर छ, posterior मा, epididymis posterior surface of each testis. Epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas. It's okay. The epididymis leads to vas deferens. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder. The epididymis leads to vas deferens. The seminiferous tubules of the testis open into the vas efferentia through rete testis. The vas efferentia leaves the testis and open into epididymis located along the posterior surface. The seminiferous tubules of the testis open into the vas efferentia through rete testis. The vas efferentia leaves the testis and open into epididymis located on the posterior. Epididymis located on the posterior surface of each testis. Epididymis located in posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to abdomen and loops over the urinary bladder. Ascends to the and it loops over urinary bladder. That ascends to the go up line, ascends go up. Okay, vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. Abdomen and loops over the urinary bladder. It receives the duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. It receives vas deferens. Okay, receives seminal vesicle दुईटा हुन्छ, prostate दुईटा हुन्छ, bulbo urethral पनि दुईटै दिन्छ. त्यो prostate एउटालाई दुईटा देख्दैछ तर यहाँबाट चाहिँ. Let me check. Okay, prostate एउटा हुँदो रहेछ. bulbo urethral gland दुईटा, seminal vesicle दुईटा. इतना ज़्यादा नींद क्यों आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है ना, मैंने कॉफ़ी तो पी लिया है, सोऊंगी नहीं. कहाँ थी मैं? Okay. The male sex accessory ducts include rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. The male sex accessory ducts include rete testis, vas efferentia, epididymis, vas deferens. The seminiferous tubules of the testes open into vas deferens through rete testis. The male sex accessory ducts include rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. The male sex accessory ducts include rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. Okay.
The male sex accessory ducts include rete testis, vas efferentia, epididymis, and vas deferens. The seminiferous tubules of the testis open into the vas efferentia through rete testis. The vas efferentia leaves the testis and opens into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle. And opens into urethra as ejaculatory duct. Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and it opens into urethra as ejaculatory duct. Urethra matamons, okay. Testicular lobules, rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. These are male sex accessory ducts, not sex. Accessory ducts. Okay. Ureter. There are pair of ureter. One urinary bladder, seminal vesicle dueta, prostate aorta, bulbourethral dueta. Prostate one. Okay. Urethra, and finally urethral meatus. Urethral meatus. Glands, penis, foreskin. Isn't it glands, penis? Urethra, okay. Foreskin, glands, penis, foreskin. These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. And these ducts stores and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. Okay. These ducts store and transport the sperm from the testis. These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. These ducts stores and transport the sperm from the testis. These ducts stores and transport accessory ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. Store and transport. मुझे नहीं पता था स्टोर भी कर सकते. Store and transport the sperm. From the testis to the outside through urinary bladder. कहाँ पर originate करता है? Urinary bladder पर originate करता है and extends to the penis to its external opening called urethral meatus. Okay. The penis is the male external genitalia. The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissues that helps in erection of the penis to facilitate insemination. Okay. Erection of the penis. Spatial tissue. The enlarged end of the penis, called the glans penis, is covered by a loose fold of skin called foreskin. Glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. The male's accessory glands, okay, accessory ducts, accessory glands include paired seminal vesicles, paired seminal vesicles, a prostate, and a paired bulbourethral gland. The male sex accessory, not sex accessory, it's just accessory glands. Accessory duct, accessory glands, okay. Pair of seminal vesicles, a prostate, and a pair of bulbourethral gland. Secretion of the glands
constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. The secretion of bulbourethral glands also helps in lubrication of the penis. Exactly. The male accessory glands include paired seminal vesicle, prostate, aorta, paired bulbourethral gland. Secretion of this gland constitute the seminal plasma. Secretion of this gland constitutes the seminal plasma. Sapeko secretion like means a seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. Ke bima rich huncha fructose, calcium ra certain enzymes. Fructose, calcium ra certain enzymes. The secretion of bulbourethral glands also helps in lubrication of the penis. Okay. Male sex accessory ducts मा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा रेटी टेस्टिस आउँछ. रेटी टेस्टिसबाट वासा एफरेन्ज जान्छ. पोस्टेरियर एन्डपट्टि जान्छ, त्यसलाई के भन्छ इपिडाइडमिस. पोस्टेरियर एन्डपट्टि नै हैन, पोस्टेरियर सर्फेस अफ द एब्डोमेन. ओके. अनि त्यहाँदेखि फाइनली वासा एफरेन्जिया. ओके, वासा एफरेन्जिया कहाँनिर जान्छ? एब्डोमेनमा भइकिन युरिनेरी ब्ल्याडरमा लुप गर्छ. Then finally seminal vesicle-बाट के हुन्छ? Ejaculatory duct आउँछ. Yes, ejaculatory duct opens. It receives duct from seminal vesicles and open into urethra as ejaculatory duct. Okay, ejaculatory duct अहिले भनिहाल्नु हुँदैन. Seminal vesicle-बाट के हुन्छ? duct आउँछ. It receives a duct from seminal vesicles. Okay. सेमिनल भेसिकल्सबाट के हुन्छ? डक्ट आउँछ. एन्ड फाइनली कहाँनिर गएर ओपन हुन्छ? युरिथ्रामा गएर ओपन हुन्छ एज अ एजाकुलेटरी डक्ट. अब चाहिँ भयो वास्ट डिफरेन्स दट एसेन्स रिसिभ्स डक्ट फ्रम सेमिनल भेसिकल, ओपन्स इन्टु युरिथ्रा एज एजाकुलेटरी डक्ट. ओके, युरिथ्राको एन्ड एक्सटर्नल ओपनिङलाई के भन्छ? युरिथ्रल मिटस. ओके, पिनसमा फोर स्किन र ग्लान्स पेनिस पनि हुन्छ. ओके, एक्सेसरी डक्ट्समा स्पर्म स्टोर पनि हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट पनि हुन्छ. मेल टु एक्सटर्नल जेनाइटल. ओके, फर्स्टमा हामीलाई के दिएको थियो नि त? मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पेल्भिसमा थियो भयो होइन. टेस्टिसको बारेमा पढ्यो, एक्सेसरी डक्ट्सको बारेमा पनि पढ्यो, यसको अर्डर पनि पढ्यो. रेटी टेस्टिस, वास एफरेन्जिया, देन एपिडाइडमिस, फाइनली लिडिङ टु वास एफरेन्स. ग्ल्यान्ड्सहरूमा 3टा ग्ल्यान्ड्स छ, पढ्नु आँटेको छ. एक्सटर्नल जेनाइटलमा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ सिर्फ एउटै मात्रै हुन्छ, पिनस हो. ओके, इट इज मेड अप अफ स्पेसल टिस्युज जसले के गर्छ? इरेक्सनमा हेल्प गर्छ अनि के गर्छ? इन्सेमिनेसनमा पनि हेल्प गर्छ. Glands, penis, foreskin, enlarged end, loose hold of skin. Male accessory glandमा 3टा कुरा हुन्छ. pair of seminal vesicle, prostate र pair of bulbourethral gland. यिनीहरूको सबैको सिक्रेसन टुगेदरलाई के भन्छ? सेमिनल प्लाज्मा. के भन्दो रहेछ? सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा क्याल्सियम, फ्रुक्टोज र सर्टेन एन्जाइम्स रिच हुन्छ, मतलब कि प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा. सेमिनल प्लाज्मा भन्छ. 3टाको सिक्रेसनलाई के भन्छ? सेमिनल प्लाज्मा भन्छ. अब यसलाई एजाकुलेटरी डक्ट भनेर नपर है, युरिथ्रामा जाँदाखेरि मात्रै एजाकुलेटरी डक्ट भनेको छ. त्यो पनि यसको लागि सेमिनल भेसिकल्सको लागि. इट रिसिभ्स अ डक्ट फ्रम, जुन चाहिँ डक्ट चाहिँ सेमिनल भेसलबाट आउँदैछ त्यो कहाँनिर ओपन हुन्छ? युरिथ्रामा. It receives duct from seminal vesicle and opens into urethra. Vasa difference okay? As the ejaculatory duct. त्यता मात्रै भनेको छ. यहाँ के भन्छ? सेमिनल प्लाज्मा भनेको छ के? सेमिनल भेसिकलबाट हुन्छ, तर bulbourethral gland along with prostate बाट हुन्छ. सेमिनल प्लाज्मा हुन्छ. Secretion of this glands constitutes seminal plasma. के हुन्छ यसमा? एन्जाइम, सर्टेन एन्जाइम्स हुन्छ, फ्रुक्टोज हुन्छ अनि क्याल्सियम हुन्छ. Fructose, rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral gland, okay, जुन चाहिँ हाम्रो सानो bulbourethral gland देखेको छ नि अघि, त्यसको सिक्रेसनले के गर्छ? लुब्रिकेसनमा हेल्प गर्छ.
interstitial cell. Spermatogonia, spermatozoa, Sertoli cell, not cell, spermatogonia, sperm mother cell, male germ cell, okay. Leydig cell, androgen, testicular hormone, androgen, that's it. Ureter, okay, testis, scrotum, testis, vas deferens, ureter, seminal vesicle, urinary bladder, prostate, bulbourethral gland, urethra, glans, penis, foreskin, penis. Ejaculatory duct, rectum, anus. Seminal vesicle. Ejaculatory duct के लागि भन्छ seminal vesicle जानेर आएर केसँग जोडिन्छ vas deferensसँग जोडिन्छ फाइनली ओपन काउन्सिलहरू युरिथ्रामा हुन्छ ejaculatory duct okay hold sleep okay the female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct pair of ovaries pair of tube uterus cervix vagina and external genitalia located in the pelvic region. Female reproductive system कहाँनिर represent हुन्छ female reproductive system ने एक मिनट देखती हूँ वाईफाई से तो connected हूँ female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct uterus cervix vagina and external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation
fertilization and pregnancy, birth and childcare. These part of the system along with a pair of mammary gland. Okay, ठीक है उनसे sana था pair of ovaries, pair of oviduct, uterus, then cervix, finally vagina. पांचों कुरा pair of ovaries, pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. External genitalia located in the pelvic region. Okay. These parts of the system, along with a pair of mammary gland, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. Process of ovulation, fertilization. Process of ovulation, fertilization, and pregnancy, childbirth, childcare, birth and childcare. Ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. Mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, and birth, along with childcare. Ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and childcare. Ovaries are the primary female sex organ. Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete ovum and several steroid hormone, ovarian hormone. Ovaries are the primary female sex organ. Primary female sex organ की वो ovary that produce the male gamete. That produce the female gamete ovum. Ovary लिखी करता female gamete ovum produce करता. Primary sex organ की वो ovary नहीं हो. And several steroid ovum को साथ साथ steroidal hormone पनि secrete करता ovarian hormone. The ovaries are located on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and the uterus by ligament. Pelvic wall र uterus सँगै गरेको हुन्छ ligamentले जोडिएको हुन्छ. Each ovary is covered by thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla. Okay. Female को reproductive system कहाँ हुन्छ? Pelvic region मा हुन्छ. पाँचवटा कुरा के हो जसले female reproductive system बनिन्छ. Pair of ovary हुन्छ, pair of oviduct हुन्छ, uterus हुन्छ, cervix हुन्छ, vagina हुन्छ अनि external genitals पनि हुन्छ. This part of the system along with the pair of mammary gland is the structural and functional unit of structurally and functionally integrated. A mammary gland integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. Ovulation, fertilization, pregnancy, birth care and childcare. Okay. Ovaries are the primary female sex organ. Ovary हो primary female sex organ हो. त्यसको बादमा who is that? Hey, मुझे लगा जीजी है. Ovaries are the primary sex organ that produce female gamete. Ovum produce करछ के ovaries ले. Ovary के गर्छ ovum produce गर्छ along with ovarian hormones. Ovarian hormone के हुन्छ steroidal ovarian hormones. Ovaries को लोकेसन कहाँनिर हुन्छ न त pelvic region मा हुन्छ. यो लिगामेन्टले युटेरस सँग मात्रै नजोडेर वल सँग पनि जोडेको हुन्छ एब्डोमेन को वल सँग. ओके. लेन्थ चाहिँ यसको कति हुन्छ 2 to 4 सेन्टिमिटर. ओभेरी को 2 to 4 सेन्टिमिटर यत्रो ठुलो हुँदैन 2 to 4 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो. ओके. The ovaries are located on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to pelvic wall. एउटा pelvic wall सँग हुन्छ अनि uterus सँग लिगामेन्टले जोडेको हुन्छ. Each ovary is covered by ovary ले केले कभर गरेको हुन्छ thin epithelium. Thin epithelium ले कभर गरेको हुन्छ. ओके. ओभरी लाई केले कभर गरेको हुन्छ thin epithelium ले. Thin epithelium ले कभर गरेको हुन्छ. Each ovary is covered. Okay, each ovary is covered by a thin epithelium. दुईटै ओभरीलाई केले कभर गरेको हुन्छ थिन एपिथेलियमले गरेको हुन्छ अनि यसको दुईटा जोन हुन्छ. ओभरीको पनि दुईटा जोनमा के हुन्छ डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ which encloses the ovarian stroma. Okay. Ovary is covered by thin epithelium which covers the ovarian stroma. Okay.
which encloses the ovarian stroma. Ovarian stroma पनि दुईटा भागमा बाँचेको हुन्छ, पेरिफेरल जोन र the stroma is divided into two zones. Stroma, ovarian stroma. Okay, the stroma is divided. Stroma ले केले कभर गरेको हुन्छ? इपिथेलियल सेलले कभर गरेको हुन्छ नि. इपिथेलियम सेलले कभर गरेको हुन्छ. स्ट्रोमाको दुईटा भाग के हो भने त मलाई नि याद छैन. पेरिफेरल कॉर्टेक्स र इनर मेडुला. पेरिफेरललाई कॉर्टेक्स भन्छ. पेरिफेरल कॉर्टेक्स र इनर भित्रपट्टिकोलाई मेडुला. पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला. ओके, ओभेरीको स्ट्रोमा इपिथेलियल सेलले कभर गरेको हुन्छ. स्ट्रोमा दुईटा भागमा बाँडिएको हुन्छ. बाहिरपट्टिकोलाई भन्छ पेरिफेरल कॉर्टेक्स, भित्रपट्टिकोलाई भन्छ इनर मेडुला. मेडुला र कॉर्टेक्स. ओके, uterus. This is uterus, urinary bladder. Uterus, urinary bladder तल्लोपट्टि हुन्छ. Okay, uterus, urinary bladder. यो के हो? Pubic symphysis. Pubic symphysis. Pubic symphysis. Urinary bladder. Uterus. Cervix. Uterus, cervix. This is vaginal orifice. Labium majora. Labium minora. Clitoris. Urethra. Anus. Rectum. Anus, rectum. Anus, rectum. Rectum, anus भयो. Uterus. यो के हो? Uterus हो. यो के हो? Cervix हो. त्यहाँदेखि this one is vagina. Okay, this one is cervix, this one is vagina. Vaginal orifice. Clitoris. Labia minora, labia majora. Vagina, cervix, uterus, urinary bladder. Urinary bladder, this is urethra. Urinary bladder and urethra. Urinary bladder, urethra. Urinary bladder, urethra. Pubic symphysis. Pubic symphysis. Okay, pubic symphysis. Diagrammatic section view of female pelvis. Female pelvis showing reproductive system. Showing reproductive system. Okay. Left and right. Ovarian stroma, like ovarian stroma like cover गरेको हुन्छ epithelially. Epithelium. Which includes the ovarian stroma, peripheral cortex, inner medulla. Jones. Okay. The oviduct, fallopian tube. The oviduct, fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Okay, accessory ducts के रहेछ? Fallopian tube, uterus र vagina. Cervix आएन पनि त. Fallopian tube, uterus र vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. 10 to 12 centimeter long. Okay, 10 to 12 centimeter. Unit याद राख पहिला long भएको छ. Centimeter. 10 to 12 centimeter long. 10 to 12 centimeter long. Long and extends from the periphery of the each ovary to the uterus. Periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is a funnel-shaped infundibulum. Ovary, infundibulum, funnel-shaped. The edges of the infundibulum possesses finger-like projection called fimbriae, which helps in collection of ovum after ovulation. Infundibulum fimbriae, funnel-shaped infundibulum, funnel-shaped ovaries, funnel-shaped infundibulum, fimbriae, finger-like projection fimbriae. Okay. Ampulla, isthmus. Infundibulum. Fimbriae, infundibulum, ampulla, isthmus. Uterine cavity.
Uterine fundus, not a component of fallopian tube. Okay, uterine cavity, uterine fundus. Not a component of fallopian tube. Uterine fundus, not a component of fallopian tube. Okay. Fallopian tube ma tinta grounds, isthmus, ampulla, infundibulum. Isthmus, ampulla, infundibulum. Ovary, infundibulum. Okay, the infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The oviduct, fallopian tube, uterus, and vagina constitute the female accessory duct. Constitute the female accessory duct. Constitute the female accessory duct. इसमें हमें बोलना है ना. Constitute the female accessory ducts. Constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. Is the funnel-shaped infundibulum. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovule to the uterus. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. Fallopian tube, uterus, and the vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The oviduct, fallopian tube, uterus, and vagina is the female accessory duct. Oviduct, uterus, and vagina. Accessory duct, 10 to 12 centimeter long. 10 to 12 centimeter long, 10 to 12 centimeter long, and extends from the periphery of each ovary to the uterus. And extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is a funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possesses infundibulum finger-like cross-section, which has a collection of ovum. The edge of the infundibulum possesses finger-like cross-section called fimbriae. The edges of the infundibulum possess finger-like cross-section called fimbriae, which has a collection of ovum after ovulation. Ovulation को बाद में कैंसर ovum में collect करता है. The edge of the infundibulum possesses finger-like cross-section called fimbriae, which has a collection of ovum after ovulation. नींद आ रही है. The infundibulum leads to the wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct, isthmus, has a narrow lumen and joins the uterus. Isthmus has narrow lumen and joins the uterus. Isthmus has narrow lumen and it joins the uterus. Ampulla, wider part of the oviduct. Okay.
uterine cavity. Infundibulum, ampulla, isthmus, fallopian tube. Infundibulum, fimbriae, ampulla, isthmus, fallopian tube, ovary. Uterine cavity, cervix, cervical canal, cervix, cervical canal, and vagina. This is vagina. Hey, ये लेबलिंग भी ना इतना गलत गलत दिखाते हैं ना, मुझे समझ में ही नहीं आता. Endometrium, myometrium, and perimetrium. Perimetrium, myometrium, smooth muscles. Okay, endometrium, endometrium, myometrium, and perimetrium. Endometrium, myometrium, or perimetrium. Okay, uterine cavity, uterine fundus. Uterine fundus, not a component of fallopian tube. Uterine fundus is not a component of fallopian tube. Okay, cervix, cervical canal, and vagina. Cervix, cervical canal, and vagina. कुछ भी लेवल कर देते हैं ये लोग, गधेड़े लोग. सर्वाइकल कैनल ये अंदर वाला है, सर्विक्स ये वाला है, वजाइना यहीं पे दिया है. The uterus, okay, the last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. Narrow lumen joins the uterus. The uterus is single and is called the uterus is single and is also called womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments. Inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. It is supported by the ligament attached to the pelvic wall. Supported by ligaments attached to the pelvic wall. It's okay, ma. You will be fine. Supported by ligaments attached to the pelvic wall. It's okay. It's okay. It's okay. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina. Uterus opens into vagina through a narrow cervix. कुछ भी होता रहता है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता. It is supported by ligaments attached to the It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus is single and it is also called a womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. कितना कुछ सोचती हूँ मैं, क्यों सोचती हूँ? The uterus is a single and it's okay, ma. It's okay. It's okay, bro. It's okay. The uterus is single and is also called womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. Supported by ligament attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through narrow cervix. Uterus opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal. Cervical canal along with vagina forms the birth canal. Birth canal, cervical canal plus vagina. The wall of uterus has 3 layers of tissues: the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of external thin membranous perimetrium. External thin membranous. फर्स्ट लट कंप्लीट होके कोई लिख दो, मैं पिन कर दूंगी. एक्सक्यूज मी. ओ क्या बोल रही थी मैं भूल गई. अरे भाई साहब, क्यों इतना जल्दी भूल जाती हूँ. The wall of uterus has 3 layers of tissues: the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles, myometrium, and the inner glandular layer called endometrium. Perimetrium, thin muscular membranous, thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles, myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical change during external thin
membranous perimetrium, middle thick layer, smooth muscles, myometrium, middle thick, smooth myometrium. Middle thick layer of smooth muscles, myometrium. Okay, smooth myometrium, and the inner glandular layer called endometrium. सर्वजीता तुम थोड़ा लेट आई. Inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. Glandular layer. Endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of baby. Thick, smooth muscles. Thin, क्या बोलते हैं perimetrium, membranous. Glandular layer. So Ruchita, are you there or you left? उतना लिखने के बाद हाँ analytics. Okay. Nice. अब तुम लेट आ गए. कभी सर्वजीता लेट आ जाती है, कभी तुम लेट आ जाते हो वैभव, कभी सर्वजीता लेट आ जाती है. मैं सर्वजीता को बोल ही रही थी कि वैभव चला गया है, तुम लेट आ गई. अब तुम्हें भी सेम चीज बोलूंगी, सर्वजीता चली गई है, तुम लेट आ गए हो. नींद नहीं आ रही है लेकिन ठीक से नहीं सोया. 5 पे सोई थी ना. 5:36, 6:37, 7:38, 8:39, 9:30, 10. 5 आवर ही सोई. कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ. आ गई वापस.
ओके। हाय संगीता। बायो का रिवीजन कहाँ से करे? बायो का रिवीजन कोई ना है, एक वीडियो देख लो लंबा वाला यूट्यूब में, जिसमें आजकल वो टीचर लोग करते रहते हैं, तो लाइव सेशन भी रखते हैं, एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं जल्दी जल्दी करके। लॉन्ग होता है लेकिन 15 आवर जितना। मैं भी तो सब कुछ भूल गई। 11 का जब पढ़ती हूँ ना 12 का भूल जाती हूँ, 12 का पढ़ती हूँ 11 का भूल जाती हूँ। बायो तो बना ही भूलने के लिए। शुभम आर यू देयर? शुभम आर यू देयर? आई थिंक शुभम को बहुत बुरा लगा कि उसका लेकिन वो आज जब आएगा ना तभी बोलूंगी, अभी बोलूंगी तो ये बैक बाइटिंग जैसा होगा ना, पता नहीं कब आएगा। प्लेन का स्टोरेज फुल हो गया, मेरा तो ना फुल नहीं हुआ है, एम्प्टी जैसा लग रहा है, कुछ ही है, कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है दिमाग में। जो सागर की तरह बोलता है ना, मुझे उन लोगों को चाटा लगाने का दिल करता है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते क्या हम लोग? दो इस पहले ना मैं इतना कंफ्यूज होती थी, मैं भी यही सोचती थी जैसा ये सागर सोचता है ना। फिर मैं एक बार एग्जाम लिखने गई थी तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉस और रेस्पिरेटरी कोशेंट, दो ऑप्शन में मैं इतना कंफ्यूज हुई, इतना कंफ्यूज हुई, फिर मैंने गलत मार्क करके बाहर निकल दिया। मैं निकल दी मैंने, नहीं निकली मैं, भाई साहब इतना मुश्किल हिंदी भी। मैं ना चाय भी बना के आती, मैं चाय भी पी के आती। वैसे तो 2 ही मिनट है, इतना जल्दी चाय नहीं बनता। मैं प्रे कर लूँ क्या, या फिर नेक्स्ट सेशन में करूँ? हाय बाबा। ए शुभम तू आ गया, मुझे तुझे एक बात बोलना था। तू ना मैं ऐसा बोलती रहती हूँ ना, मैं थोड़ी देर पहले ही तेरे बारे में बोलने वाली थी लेकिन मैं नहीं बोली क्योंकि फिर वो बैक बाइटिंग हो जाएगा ना, इसलिए नहीं बोली। अब वो जो है ना वैभव, उसका सीए फाइनल होने वाला है ना, तो और तेरा बीच वाला है, तो तुझे बुरा लगा ना उसकी वजह से, तू अब अटेंड नहीं करता ना लाइव सेशन इतना ज़्यादा।
यही रीजन है ना, एक जेलसी जेलसी हो गया ना ये। या तो तू बहुत ज्यादा भाव खाता है क्योंकि मैं बोलती हूँ कि तू व्हाई यू लेफ्ट लाइव सेशन ऐसा करके मैं बोलती रहती हूँ ना। मैं प्रे कर लूँ? आई थिंक मुझे प्रे कर लेना चाहिए। तुम लोग ना सर्वजिता और वैभव, जब वैभव आता है सर्वजिता चली जाती है, जब सर्वजित आता है आती है वैभव चला गया। अभी एक टाइम पे नहीं आ सकते क्या? चलो मैं प्रे ही कर लेती हूँ, तुम लोग बकवास ही करो। तो आ गया तो ये सर्वजीता आ गया है। अब तो तुम चली नहीं गई हो ना। सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करें?
दोनों ग्रुप दे रहे हो? क्या बोल रहे हैं ये लोग? अब हाँ से मैं ऊपर से नहीं पढ़ रही हो कि मैं छोड़ दे रही हो कि? गुड मॉर्निंग भवा। वैसे तो आफ्टरनून होने ही वाला है ना? हाई डिजायर ऑफ लाइफ। बायो का एनसीईआरटी वीडियो देख के रिवाइज करें। मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो चाय बना के मैंने तो नहीं पिया क्योंकि स्लॉट स्टार्ट करना था ना, इसलिए नेक्स्ट वीक में पीऊँगी। ओके सर्वजीता, दूसरा वाला नासा करने में लग जाना। अब मैं शुभम के साथ मजाक कर रही थी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि उसको बुरा लगे। शुभम हमेशा अटेंड करता था ना, तो ऑल ऑफ ए सडन उसने अटेंड करना बंद किया, इसलिए मैंने बोल दिया या तो ये भाव खा रहा है क्योंकि मैं शुभम शुभम करती रहती हूँ ना हर लाइव सेशन में, या फिर ये तुमसे जल गया है। अरे जिस किडिंग, वो ईमा छेड़ रही थी। हाँ भी। I'm good, hundreds. Hi Nonu, how are you? Good luck Nonu. चैट्स छोड़, ऐसे ही छोड़ दूं क्योंकि सर्वजीता वापस आएगी तो वैभव को कुछ पूछना होगा ना, सर्वजीता को भी कुछ बोलना होगा ना, या फिर कुछ ऐसा ही। ओहो, ये लो आधा ब्रैकेट तो चला ही नहीं गया। वैभव पढ़ते भी रहना के, सर्वजीता को देख के पिघल मत जाना। लड्डू की तरह बेटा मन में लड्डू फूटा, लड्डू बेटा मन में एक और लड्डू फूटा। क्या अभी क्या पढ़ोगी? अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ूंगी नोनू। गुड लक ऑल। टाइमर स्टार्ट करूं? हम लोगों के साथ ही पढ़ोगी ना निधि, या फिर नहीं पढ़ोगी? वैभव के मन में गुलाल ही गुलाल हो गया है अभी सर्वजिता को देख के। गुलाल ही बोलते हैं ना कलर को, मैंने गलत तो नहीं बोला ना? कभी कभी ना मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ ना, फिर वो अब्यूजिव वर्ड होता है। ओके, गुड लक भावा। गुड लक सागर, गुड लक शुभ। सही बोला, ओके। डिजायर ऑफ लाइफ, गुड लक। ओह ओके, गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक एवरीवन। लेट्स स्टार्ट स्लॉट 2, ओके। द फीमेल,
इसको ना ऑफ कर देती हूँ मैं. The female external genitalia includes mons pubis, labia majora, mons pubis, labia minora, hymen, and clitoris. Female external genitals: mons pubis, labia majora, labia minor, clitoris, and hymen. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Covered by mons pubis, covered by cushion of fatty tissue covered with skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissues which extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening. The labia minora are paired folds of tissues under the labia minora. Majora are paired folds of tissues under labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. Down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening. The labia minora are paired folds of tissues under the labia majora. Labia minora are paired folds of tissues under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. Membrane. Called hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies on the upper junction of the two labia minora. Finger-like structure lies in the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. Insertion of vaginal tampon. Active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience.
The female external genitalia include mons pubis is a cushion of fatty tissues covered by skin and pubic hair. The mesoda are fleshy folds of tissue which extends down the mons pubis and surrounds vaginal opening. The labia minora are paired of folds of tissues under the labia majora. The opening of the hymen is often covered partially by a membrane called hymen. Opening of the vagina is covered partially. The clitoris is finger-like section structure which lies at the upper junction of the labia minora. Labia minora above the urethral opening. The reliable indicator of virginity. Birth canal, vaginal canal plus cervical canal. ओके, ये पोर्शन मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है. गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. एक बात थोड़ा मुश्किल है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. उसके बाद तो सब कुछ ईजी है. सबसे हार्ड पोर्शन में मैं आने वाली हूँ. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ईजी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी नॉर्मल. ये गैमेटोजेनेसिस मुझे समझ में ही नहीं आता. यहीं से क्वेश्चन आता है, मैं क्या करूँ. A functional mammary gland is characterized. Functional mammary gland is a characteristics of all female. Functional mammary gland is characteristics of all the female. Functional mammary gland is characteristics of all female mammals. Okay, a functional mammary gland is characteristic of all female mammal. A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammary gland are paired structure, breast that contains a glandular tissue and variable amount of fat. A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammary gland are paired structure, breast. The mammary gland are paired structure, breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. The mammary gland are paired structure, breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. Glandular tissue as well as variable amount of fat. A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammary gland are paired structures, breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. Okay, a functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammary gland are paired structures, breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing a functional characteristics. Can I focus here? A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammary gland are paired structure. Mammary gland एक पेयर हुन्छ ओके दुईटा हुन्छ. Paired structure breast that contain glandular tissue. Glandular tissue हुन्छ variable amount of fat हुन्छ. के हुन्छ glandular tissue हुन्छ र secretion को लागि glandular tissue र fat हुन्छ ओके. Excuse me, variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli.
The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. Okay, glandular tissue of each breast. Glandular tissue र fats हुन्छ. Glandular tissue divide भएको हुन्छ 15 to 20 mammary lobes मा. Glandular tissue 15 देखि 20 वटा mammary lobes मा के भएको हुन्छ divide भएको हुन्छ. Containing, okay, mammary lobes भित्र के हुन्छ clusters of cells हुन्छ, containing cluster of cells called alveoli. mammary lobes 15 देखि 20 वटा हुन्छ. Okay, mammary gland, mammary lobes त्यसको भित्र cells हुन्छ, clusters of cells जसलाई alveoli भन्छ. The cells of alveoli secrete milk, okay, which is stored in the cavities called lumen of the alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe joins to form mammary duct. Okay, mammary gland हुन्छ. mammary gland डिवाइड भएको हुन्छ 15 देखि 20 वटा mammary lobes मा. mammary lobes को भित्रपट्टि के हुन्छ clusters of cells हुन्छ जसलाई के भन्छ alveoli. alveoli ले milk लाई स्टोर गर्न सक्छ भित्रपट्टि. ओके, the cells of alveoli secrete milk. ए हैन, secrete पनि यसले नै गर्दो रहेछ नि त. the cells of the alveoli secretes milk which is stored in the cavities lumens of the alveoli. The alveoli opens into alveoli कहाँनिर ओपन गर्छ mammary tubules मा ओपन गर्छ. ओके, alveoli कहाँनिर ओपन गर्छ रे mammary tubules मा. टिटिट ओके, alveoli कहाँनिर ओपन गर्छ mammary tubules मा. ओके, यस्तै एउटा एउटा alveoli को एउटा tubule भयो हैन, त्यस्तै कतिवटा हुँदो रहेछ the cells. ओके, लोब भित्र एउटा, एक मिनट में पहले ड्रॉ करके देखते हैं, ऐसे भी मुझे याद नहीं रहेगा वैसे तो. सबसे पहले भाई इतना बंदर का मुंह जैसा लग रहा है, पहले से ही तेल गिर गया है शायद. This is gland. Mammary gland. Okay, mammary gland को भित्रपट्टि के हुन्छ भन्दा त mammary lobes 15 देखि 20 वटा mammary lobes हुन्छ. एउटा, दुईटा, र यो चाहिँ एउटा ठुलो बनाउँछ mammary lobes. त्यसमा के हो mammary lobes. के mammary glands को भित्र mammary lobes 15 to 20. इट्स ओके माँ, तू कर सकती है, तू सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकती है. ओके, mammary lobes को भित्र के clusters of cells called alveoli. एउटा भयो, दुईटा भयो, तीनटा भयो. These are alveoli. alveoli हुन्छ. mammary glands हुन्छ. mammary gland को भित्र 15 to 20 mammary lobes हुन्छ, lobules या फिर lobes हुन्छ. ओके, यसले cluster of cells just alveoli हुन्छ, cluster of cells. ओके, called alveoli, containing cluster of cells called alveoli. alveoli ले के गर्छ secretes milk, secretes and synthesize and secrete. The cell of alveoli secretes milk which is stored in the cavities, lumen of alveoli. इसको lumen में क्या होता है milk होता है. ओके, यहाँ भीतर में क्या होता है milk होता है, milk होता है.
यो मिल्कलाई चाहिँ के गर्छ? The cells of alveoli secretes milk. The cells of alveoli. Cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secretes milk, which is stored in the cavities, lumen of alveoli. The cells of alveoli secretes milk. क्लासेस भैया की क्लासेस में ना 2 बच्चे हैं, आई थिंक दे लाइक ईच अदर. उसका नाम शिवम समथिंग ऐसा कुछ है, और उस लड़की का नाम ए से आता है. मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे बोल ही देती हूँ. आई मैं पढ़ते वक्त क्या क्या याद करती हूँ. Mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk, which is stored in the cavities, lumens of alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The cells of alveoli secretes milk. The cells of alveoli secrete milk, which is stored in the cavities, lumen of alveoli. The cells of alveoli secrete milk, which is stored in the cavities, lumen of alveoli. Lumens of alveoli. The cells of alveoli secretes milk, which is stored in the cavities, lumen of the alveoli. The alveoli open into mammary tubules. The cells of alveoli secrete milk, which is stored in the cavities, lumen of alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. Milk, which is stored in the lumen of the alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. Mammary tubules. The tubules of each lobe joins to form a mammary duct. Duct. Several mammary duct. Okay. Mammary duct. It's okay. मुझे बुरा लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं. Several mammary ducts drains to form wider mammary ampulla is connected to lactiferous duct through. Excuse me.
It's okay. Calvola opens into mammary tubules. The tubules of each lobe joins to form several mammary ducts joins to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which several mammary ducts. Several कहाँ गया? Several mammary duct joins to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. Okay. Ampulla. Lactiferous duct. Duct. इतना पढ़ने के लिए इतना बस है. सबसे पहले आता है मैमरी ग्लैंड. ओके, बढ़िया सा एक मैमरी ग्लैंड होना चाहिए. उसके अंदर क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसका हम क्या बोलते हैं? 15 to 20 मैमरी लोब्यूल्स होता है उसके अंदर ही. मैमरी डक्ट के अंदर 15 to 20 होता है. ये ना वही है ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर ही बोला ना उस लाइन में तब सब स्ट्रक्चर. Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. यो लोब को भित्र के हुन्छ? सेल्स हुन्छ, क्लस्टर्स अफ सेल्स हुन्छ, जसलाई के भन्छ? एल्भोलाई पनि भन्छ. एल्भोलाईले सिक्रिट गर्छ मिल्क यसको ल्युमेनमा. के एल्भोलाईको त्यहाँदेखि भित्रपट्टि मिल्क स्टोर भएको हुन्छ. यिनीहरू कहाँबाट निस्किन्छ बाहिर? म्यामरी ट्युब्युल्सबाट. धेरै म्यामरी ट्युब्युल्स मिलेर के बनिन्छ? एउटाभन्दा धेरै म्यामरी ट्युब्युल्स मिलेर बनिन्छ तिम्रो मैमरी डक्ट. डक्ट ही बनता है ना? हाँ, मैमरी डक्ट. मैमरी डक्ट एउटा दुईटा अरूसँग जोडेर के भन्छ? मैमरी एम्प्युला. त्यसको बादमा चाहिँ के भन्छ? लैक्टिफेरस डक्ट. ज्यादा एम्प्युला जोडेर के भन्छ? लैक्टिफेरस डक्ट. ओके, लैक्टिफेरस डक्ट. इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किचन एक ऐसे गगन के तले जगन्ना हो आंसू. इसको कहीं पे पेस्ट कर देती हूँ ताकि जल्दी से याद हो जाए. फिर बोला कहीं क्यों ऐसा किया था?
It's not necessary, I just want to फर्स्टमा के छ mammary gland छ mammary gland भित्र glandular tissue glandular tissue glandular tissue glandular tissue differentiate होगी 15 to 15 to 20 mammary ducts है mammary gland glandular tissue The mammary glands appear the structures, breasts that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. A functional mammary gland is characteristics of all female. The mammary gland appear the structured breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing of cells called alveoli. The cells of alveoli. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe joins to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. I mean this stress. That's okay now. Am I visible? Am I visible? Anyone? Am I visible? Okay. Gametogenesis. Okay. तुम्हें देखते ही मुझे सर्वजिता का याद आता है पता नहीं क्यों My mind. The primary sex organs. The testes in the males and the I think she is here. वो सुन रही होगी चुपके से. The primary sex organ. The testes in males and ovary in female. Testes in male and ovaries in female produces gametes, sperms and ovum respectively by the process called gametogenesis. In testes, the immature male germ cell spermatogonia produce sperms by spermatogenesis. By the process called in testes, immature male germ cell spermatogonia. Germ cell. Male germ cell. In testes, the immature male germ cell spermatogonia. Male germ cell. In testes, the immature male germ cell spermatogonia produces sperms by male germ cell.
Spermatogonia, male germ cell, spermatogonia, spermatogonium. Sperms by spermatogenesis. Spermatogonia, spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubules, multiply by mitotic division. Male germ cell, okay. Male germ cell. Why am I getting so confused? Male germ cell, spermatogonia, produces sperms by spermatogenesis. Sperms. Sperms. Spermatogenesis. Immature male germ cell, spermatogonia, and by spermatogenesis. Spermatogenesis, okay? Spermatogonia present inside part of seminiferous tubules, multiply by mitotic division. These are male germ cell. Mother cell. Mitotic division. Mitotic division, okay? Multiply by mitotic division and increase in number. Increase in number. Each spermatogonia is diploid. And contain 46 chromosomes. D-I-P-L-O-I-D diploid. 46 chromosomes. CHRO.
46 chromosome. Chromosomes diploid. Spermatocytes periodically undergoes meiosis. 46. Number 46 chromosome. I feel so bad. क्या हो रहा है यहाँ पर? Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. Primary spermatogonia called spermatocytes. Primary spermatocytes. Primary spermatocytes. Primary spermatocytes. TS sites again. Some meiosis. Some meiosis. In some of the spermatogonia, this one. Spermatogonia. Spermatogonia. Primary spermatogonium. Some. It is meiosis. A primary spermatocyte completes the first meiotic division. A primary spermatocyte completes the first meiotic division, reduction division leading to the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. Primary spermatocytes periodically undergoes meiosis. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes undergoes meiosis. Primary spermatocytes complete the first meiotic division. First meiosis. First meiosis, meiotic division. Primary spermatocytes complete first meiotic division, reduction division. Okay. Division, reduction division. Two equal haploid cells called secondary spermatocytes. Two equal. And haploid. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergoes meiosis of primary spermatocytes completes the first meiotic division, reduction division leading to the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte.
The primary spermatocytes completes the first meiotic. The primary spermatocytes complete the first meiotic division reduction, leading to the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. Haploid cell. Which have 23 chromosome each. Each. So secondary spermatocytes. First meiosis. Reduction division, okay. Haploid cell, secondary spermatocytes, 23 chromosome each. The secondary spermatocytes undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. Meiosis 2. Four haploid cells, okay. Secondary spermatocytes undergoes second meiotic division. Haploid spermatids. Four spermatids. Haploid. Haploid. Function 2. It is 4 equal haploid spermatids. What would be the number of chromosomes in the spermatids? Okay. Spermatids are transformed into spermatozoa sperm by the process called spermiogenesis. 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 So transformation. These are spermatozoa, okay? The spermatozoa sperms. Spermiogenesis. 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 After spermiogenesis, sperm head becomes embedded in the Sertoli cell. After spermiogenesis, sperm head becomes embedded into Sertoli cell and are finally released. After spermiogenesis, sperm head becomes embedded into the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermation. Spermatid.
Spermatid. Spermatid sertoli cell, okay? Or cell. Spermatid. Seminiferous tubules, okay? Sperm, okay. Spermiation. Spermiation, okay? Transfer this. Spermatogenesis. After spermatogenesis, sperm head becomes embedded in sertoli cell. Really, the secondary spermatocytes undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. Spermatids are transformed into spermatozoa sperm by a process called spermiogenesis. Okay. After spermiogenesis, sperm head becomes embedded to the sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. This is spermatogonium, okay? Spermatogonium, primary spermatocytes, sertoli cell. Secondary spermatocytes, meiotic division vada, haploid data, secondary spermatocytes anunsa. Mitotic division anunsa, first one. Adahi, primary spermatocytes. 1 means 2 anunsa, diploid anunsa. 46 chromosome number. Primary spermatocytes. Meiosis, first meiotic division, secondary spermatocytes. Haploid 23 chromosome number. Meiosis 2 undakeda chatta bannincha spermatids bansinallai. Haploid ends. Spermatogenesis ko process vada sperms bani. Spermatids. Spermination. Spermatozoa.
Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. Puberty spermatogenesis. Due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. Due to significant increase in gonadotropin releasing hormone GnRH. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone FSH. Luteinizing hormone LH acts on Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen. LH, luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Pituitary hormone. Hormone. LH. Luteinizing hormone acts on Leydig cell. Acts on Leydig cell. Leydig cell. Leydig cell. Or interstitial cell. Interstitial. स्लॉट 2 कंप्लीट हो गया. ओके, एक्ट्स ऑन लेडी में थोड़ा पढ़ लेती हूँ. Acts on Leydig cells and interstitial cell. Luteinizing hormone acts on Leydig cells or interstitial cell. Testicular hormone androgen. Luteinizing hormone stimulates synthesis and androgen. Androgen. Androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. Process of spermatogenesis. Luteinizing hormone, pituitary hormone, LH, acts on Leydig cell or interstitial cell, androgen, stimulate process of spermatogenesis. Luteinizing hormone, LH, acts on Leydig cell or interstitial cell, androgen, stimulate process of spermatogenesis. Stimulate process of spermatogenesis. Stimulate process of spermatogenesis. Stimulate process of spermatogenesis. Puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH that acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropin. Secretion of androgen. Androgen in turn stimulates the process of spermatogenesis. FSH. Acts on Sertoli cell and stimulates the secretion of some factors which helps in the process of spermatogenesis. ये फीमेल वाला पोर्शन में ना मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन तुम ये करके देखना कि ये तो मैं कर लूँगी, ये फीमेल वाला पोर्शन में मैं हो जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, देखते क्या होता है. Unnecessary show off, all no go.
The one who cracks the examination does it like a silent killer. Seriously, such a smart person you are, Rima. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Break, okay, we'll take a break of 10 minutes. क्लास का 1 घंटा MR. I don't know how to pronounce your name, but it's ANBU. Is it Anbu? Thank you, Anbu. No, no, it's third Mercury. Hi, Ramesh. Hi, Muhib. Uh, Write the complete sentence, Ramesh. I'm not getting what you are trying to say. Any tip and roadmap for class 12? Nah. Non-med. Okay. Ask. Oh, Vaibhav. He's there. He can guide you.
Hello, can you join me as well? Also, can you join me as well? Preeti. Is there anything wrong in your sentence? You wrote I in place of you, right? Like you have video. YouTube. Ah, you mean you also do the live session and you want me to join your session? Sure. But there is nothing in your channel. I think you wrote something wrong in your sentence. There is some error, I guess. Hi, Vishwa. Do you mean can I join you? Can you join me as well? नहीं सही तो लिखा है. You can send the link. If I get video, I'll get serious. Serious in the sense? Thank you, King Raju. I don't have any timetable. You want to start live session? Like you want to start your own channel? Then you can go ahead. I can support you, Preeti. इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं, शब्द कम पड़ जाएंगे. Shubham, are you there? क्लास 10 नहीं, क्लास 10 बहुत ज़्यादा हो गए. Okay, Preeti. Did you have your lunch? No, I haven't. अभी तो सुबह वाला ब्रेकफास्ट किया ना, तो कैसे लंच अभी खा सकती हूँ? शुभम अभी ऑडिट पढ़ रहा होगा. तुम मुझसे चिढ़ाओ मत वैभव, बस एक ही एग्जाम का तो डिफरेंस है. We are trying to study 10 hours, लेकिन डिपेंड करेगा, कभी कभी हम लोग ना लैग कर जाएंगे. How many hours you are reading in highest? कभी कभी 14 भी जाता है. I think 14 गया था एक बार. Do you like सुनील छेत्री? I think स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, डबल एच है उसके नेम में. उनके नेम में, उसके नहीं बोलना चाहिए. फुटबॉल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे.
अभी तो थोड़ा थोड़ा गर्मी है, लेकिन फिर भी चाय तो पीना जरूरी है ना। बाय बाय किंग, he wrote something and deleted it. शुभम अभी ये तो मैंने पहले ही करा था. We just ate. Hello ma'am. Hi Ramesh. I'm preparing for NEET, Preeti. Shubham and Vaibhav, are you there? SB. Vaibhav. वैभव भी बोलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है. अब ना एक का नाम एस भी रखते हैं, एक का नाम ना वीवी बोलते हैं. वैभव को वीवी बोलते हैं, ओके, ताकि ना वीवी इजी पड़ेगा. ओके शुभम इज देयर. अच्छा तो स्टार्ट करें थर्ड स्लॉट. आई थिंक ये कहीं चला गया है ना. वैभव आर यू देयर? सर्वजीता तुम गाँव प्लीज वापस आ जाओ. ओके स्टार्ट कर रही हूँ. 60 का ही रखती हूँ. तुम्हारा नाम ना इतना ज्यादा लंबा है ना वैभव, हम लोग सिर्फ वीवी लिखेंगे, ओके. तो जब भी मैं वीवी लिखूँ तुम प्रेजेंट मैम बोलना, ओके. बोलते वक्त तो भी कही वैभव. कौन सा स्लॉट रहेगा? स्लॉट 3. 60 मिनट. आज आयान नहीं आया, मैं भी सो रहा होगा. लाइक दैट अटेंडेंस. Interesting. Follicular stimulating hormone. Follicle 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 stimulating hormone. FSH. Follicle stimulating hormone. For Dolly cell. So Dolly cell and stimulates secretion of some factor. So Dolly cell. Secretion of some important factors. Secretion of some factors which helps in the process of spermatogenesis. Secretion of some factors helps in the process of spermatogenesis.
Spermatogenesis. ये कॉफी नहीं है. हाँ सही है. 2-3 कप्स ऑफ इज इक्वल टू ड्रग्स. किस एंगल से कॉफी है? मैंने सुबह एक बार पिया था, उसके बाद मैंने नहीं पिया कॉफी. Luteinizing hormone acts on Leydig cells or interstitial cell. Helps in the formation of androgen. Synthesize and secrete. So, synthesize and secrete androgen. Stimulate. Okay, androgens. Synthesize and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. यार तुम क्या ही करोगी जिंदगी में, इतनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो. बहुत जालिम है दुनिया. वैसे जालिम का क्या मीनिंग होता है मुझे नहीं पता. ओके, इफ इट्स अ बैड वर्ड मुझे बताना. Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen. Luteinizing hormone acts on Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgen. Acts on ट्रूल है. ओके समझ गई. फिर मैंने कुछ गलत नहीं कहा. अभी मैं चैट सॉल्व कर रही खुद के लिए. ओके, आई कांट सी इट, वरना मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहूंगी ना. ओके, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone FSH. Luteinizing hormone acts on Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen. Luteinizing hormone acts on Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. Follicle stimulating hormone acts on the Sertoli cell and stimulate follicle stimulating. कहाँ पर हूँ मैं? Follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone acts at the Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. Luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH. Luteinizing hormone acts as Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH. Follicle stimulating hormone acts on Sertoli cells and stimulates the release of some factors which helps in the process of spermatogenesis. The secretion of some factors which helps in the process of spermatogenesis. Okay, meiogenesis कहाँ पर है? Spermatogenesis ऐसा process कहाँ पर आता है? Spermatogenesis बोलते हैं ना सब.
The spermatids are transformed into spermatozoa. Spermiogenesis. Okay, ये वाला question. Spermiogenesis. Spermatids. Sperms. Okay, spermatids to sperms. Spermiogenesis. Male germ cell, spermatogonia. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce. Okay, ये भी हो गया था ना. In testes, the immature male germ cell spermatogonia produces sperms by spermatogenesis. Sperms, production of sperms directly from immature germ cell. Like it's a spermatogenesis. Spermiogenesis is spermatid to sperm. Luteinizing hormone. Sortuli-Salma act versa. Follicle stimulating hormone. Sortuli-Salma act versa. Secretion of some factors helps in the process of spermiogenesis. I don't want her to join us. Please, okay. Let us examine the structure of sperm. पहले मैं ये वाला बना देती हूँ ना. Spermatogonia at puberty. Okay, spermatogonia. Spermatogonia. 46 chromosomes इसमें. Spermatogonia. Mitosis. Mitotic differentiation. Mitosis differentiation. Mitosis differentiation. Primary spermatogonia. Meiotic differentiation. First meiotic division. पता नहीं कौन है. Secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes.
Okay. Spermatogonia, mitosis, differentiation, primary spermatocytes, first meiotic division, secondary spermatocytes, second meiotic division. Four haploid spermatids. Spermatids, differentiation. Spermiation. Sperms बन गए Spermatozoa, spermatids. Okay. At puberty. एक से दो, एक से दो, दो से चार. I don't know what kind of structure is this. पता नहीं क्या क्या है, आप ही जानो या अल्लाह. Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. Head, neck, middle piece and tail. Sperm. Head, neck, middle piece and tail. A plasma membrane envelops the whole body of sperm. Plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. Elongated the haploid nucleus. Haploid nucleus. Nucleus containing chromosomal material. Nucleus containing chromosomal material. It is a microscopic structure composed of head, neck, a middle piece, and a tail. A plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus.
Nucleus containing chromosomal material. Sperm head contains elongated haploid nucleus. Elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. Cap-like structure called acrosome. Anterior portion. Okay. Anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of ovum. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria. Mitochondria, energy source for swimming. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail. For the movement, energy produced of the tail, then facilitates sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculates 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% of the sperm must have normal shape and size. 60% must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. Okay, 200 to 300 million per coitus. Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate. Secretion of epididymis, vas deferens, relative testis, vas efferentia, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperms. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal plasma, and prostate. Seminal plasma and prostate. Seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. Seminal plasma. Secretion of bulbourethral, prostate, and seminal vesicles, rich in fructose, calcium, and certain enzymes, along with the sperm constitute the semen. Sperm को maintenance को लगी. Maturation and mortality of sperm. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. Essential for maturation and motility of sperm. Maturation and motility. Vas deferens, seminal vesicles, and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The function of male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgen. The function of male sex accessory duct. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgens.
Sperm released from the seminiferous tubules are transported by accessory ducts. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma, along with the sperm, constitute the semen. Semen, okay. Seminal plasma, along with the sperm, constitute the semen. The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgen. Okay, testicular hormone androgen. Testicular hormone androgen maintains the function of male sex accessory ducts and glands. Male sex accessory ducts and glands. Ducts र glands. The functions कसले moderate गर्छ, modify गर्छ, control गर्छ. The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone androgen. The middle piece possesses numerous mitochondria. Okay, sperm को structure के हुन्छ त यसमा head हुन्छ, neck हुन्छ, middle piece हुन्छ र tail हुन्छ. स्पर्म को डल्लै बडीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेनले कभर गरेको हुन्छ. हेडपट्टि ह्याप्लोइड न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ. स्पर्म को हेडमा के हुन्छ, एलोंगेटेड खालके हुन्छ, ह्याप्लोइड न्यूक्लियस हुन्छ. अदर देन दैट नेक्स्ट छदैछ मिडल पिसमा के हुन्छ, न्यूमरस माइटोकन्ड्रिया हुन्छ. माइटोकन्ड्रियाले के गर्छ, एनर्जी प्रोड्युस गर्छ टेलको मुभमेन्टको लागि. अनि यहाँ स्पर्म को हेडको अगाडि क्याप जस्तो एन्टेरियर रिजनमा के एन्टेरियर रिजनमा के हुन्छ, क्याप जस्तो एक्रोजोम्स हुन्छ. एक्रोजोम्समा एन्जाइम्स हुन्छ जसले के गर्छ, फर्टिलाइज गर्नुमा हेल्प गर्छ. Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, a middle piece, and a tail. Plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. The acrosome is filled with enzyme that helps fertilization of ovum. Fertilization of ovum help गर्छ. The acrosome is filled with enzymes that helps fertilization of the ovum. The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. Acrosome is filled with enzymes that helps in fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the cell that facilitate sperm motility. Essentially for fertilization, the human male ejaculates 200 to 300 million sperm during coitus. 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility 60% must have normal shape and size. 60% of sperm must have normal shape and size, and at least 40% of them shows vigorous motility. Sperm released from seminiferous tubules are transported by accessory ducts. Secretion of epididymis, vas efferentia, prostate, and seminal vesicles are important for the maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with the sperm. Seminal plasma along with sperm is called semen. The function of male accessory ducts and glands are maintained by, the function of male accessory ducts and glands are controlled by a hormone, testicular hormone called androgen. Plasma membrane, acrosomes, nucleus containing chromosomal material, head, neck, middle piece, mitochondria, energy source for swimming cell structure of sperm. Okay, I don't think मैं कर पाऊंगी, मैं अगर कर पाई तो this one is well and good. Okay,
The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. The process of formation of a mature female gamete, ovum. The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. Oogenesis, like even so, oogenesis, okay. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage. Embryonic development stage. Embryonic development stage. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. अब तो गया वाईफाई गया. ओ नहीं, ये तो मैं फ़ोन की उससे कर रही थी. ओके, हाय सर्वजीता. embryonic development stage. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage. When a couple of million gamete mother cell, oogonia, are formed within cell each fetal ovary. Okay. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage. When a couple of million gamete mother cell, 2 million gamete mother cell, oogonia, are formed within each fetal ovary. Fetal ovary. Million oogonia, fetal ovary, 2 million oogonia. Okay, this is initiated during embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell, oogonia. Gamete mother cell, oogonia. Gamete mother cell. Gamete mother cell. 2 million, okay. 2 million oogonia gamete mother cell. 2 million oogonia gamete mother cell are formed within each fetal ovary. Okay. After birth, okay. Fetal ovary, 2 million oogonia gamete mother cell. After birth, no oogonia. हाँ नहीं गया क्योंकि ना मैं वो कर थी शायद, क्या बोलते इसे, मोबाइल के डेटा से थी, वाईफाई से नहीं. लेकिन मेरे में तो गया है, वो पीसी में तो जाएगा ही क्योंकि वो वाईफाई से कनेक्टेड था ना. fetal ovary, 2 million oogonia. Okay. Gamete mother cell are formed within each fetal ovary and no more oogonia are formed and added after birth. This cell starts division and enters into prophase 1 of the meiotic. Okay. This starts division, enters into prophase 1 of the meiotic division.
starts division. Prophase. Prophase 1 of meiosis 1. Meiosis 1 starts division. Oogonia. Oogonia starts division. अस्तक फिर ला prophase 1 मा जान्छ of meiosis 1. It's okay, okay. Initiated during the embryonic development. Initiated during the embryonic development. Multiple oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. Formed or added after birth. These cells starts division and enters into prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at the stage called primary oocytes. This cell starts division and enters prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at this stage primary oocytes. Primary oocytes. Sites temporarily arrested. Prophase 1 of meiosis 1 enters prophase 1 of meiotic division. Meiosis. And gets arrested at the stage. Primary oocytes. Each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cell. Primary oocytes. Each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cells is called the primary follicle. Primary oocytes. Oocytes then layer of oocytes then get surrounded by a layer of granulosa cell. These are granulosa cell. Primary oocytes then get surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle. Primary follicle. Primary follicle. कितना सुंदर है यार. Primary follicle. Figure 2.7. 2.7. Section of ovary. Primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Large number degenerate from birth to adult. Sites get surrounded. Okay. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Puberty, okay.
layer of granulosa cells and is called primary follicle. Primary follicle. A large number of this follicle stays in it during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. TK. At puberty, primary follicle. Left. At puberty. Puberty. Okay. Therefore, at puberty, 6,000 to 80,000 primary follicle. Puberty in each ovary. In each ovary, okay. In each ovary. The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cell. Primary follicle. More cells. Thousand to 80,000 primary follicles are left in each of more layer of granulosa cell. Secondary follicle. Secondary follicle, okay. Secondary follicles. The secondary follicles will transform into a tertiary follicle which is characterized by fluid-filled cavity called andrum.
secondary follicle. Secondary follicle soon transform into tertiary follicle. Secondary follicle. Blue color होता है अच्छा होता ना है तो blue color. Everybody knows kung fu fighting. Tertiary follicle. Fluid filled antrum. Antrum. Fluid filled. Fluid FLUID. Fluid antrum. Fluid filled FILLED. Fluid filled. Okay, this is antrum. Okay, tertiary follicle. कर सकते हैं, तुम कर सकती हो माँ, लेकिन मुझे नहीं पता ना tertiary follicle. Tertiary TIARY tertiary follicle. Tertiary follicle. इतना कुछ लिखा है, अभी ना बाद में पढ़ती हूँ. ओके, पता नहीं कौन है, भारती होगा. अभी भी 15 मिनट है तो बाद में पढ़ूंगी. ओके, तुम्हारा कमेंट. Antrum fluid filled. Secondary follicle soon transform into tertiary follicle, which is characterized by a fluid filled cavity antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocytes within the tertiary follicle grows in size and completes its meiotic division. Tertiary follicle. Everybody knows kung fu fighting. The secondary follicle, okay, antrum, the theca layer is organized into inner theca interna. This is
या अल्लाह क्या कर सकते हैं, इंटरना, INTER, इंटरना, इनर लेयर, ओके, इंटरना, इनर थिका, inner theca, okay, then externa, outer theca, externa, outer theca, externa and interna, okay. It is important to draw your attention that it is at this stage the primary oocytes within the tertiary follicle grows in size and complete its meiotic division. When first okay. Primary oocytes within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. Completes its first meiotic division. First meiotic division of subcellular. I think I'll be fine. First meiotic division. Important to draw your attention that it is at this stage that primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocytes. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid. It is an unequal division. कोई बात नहीं, माँ तो सही कर सकती है. Unequal division results in the formation of large haploid secondary oocyte. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte. Tertiary follicle. The secondary follicle soon transform into the secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized by the fluid-filled cavity called antrum. The theca layer is organized into an inner theca and an outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage the primary oocytes with the tertiary follicle within the tertiary follicle. Okay. It is an unequal division resulting in the size and completes its first meiotic. Within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and the tiny first polar body. भाई साहब अरे ओ भाई साहब, आदत हो गई शायद मुझे भाई साहब बोलने. तुम obviously I hate it, but
ही कर सकते हैं, ये हुआ टर्सरी फॉलिकल. ओके, टर्सरी फॉलिकल, it is unequal division. Okay, unequal division resulting in the formation. Unequal division. Unequal division. This is tertiary follicle. Tertiary, T-I-E-R-A, tertiary follicle. Tertiary follicle. Tertiary follicle, and this is primary oocytes. Oocyte. It is an unequal division resulting in the form of large haploid secondary oocyte. Large secondary oocytes and a tiny first polar body. First body, it's tiny. Okay. Secondary oocytes, large haploid, it's large secondary oocytes. Okay. Secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm. Retains bulk of nutrient. Nutrient-rich cytoplasm. Nutrient-rich cytoplasm. Okay. Nutrient-rich cytoplasm. Primary oocyte. Yes, oocytes. Think of any advantage for this. Does this the polar body, the first polar body born out of the first meiotic division? Born out of first meiotic division. Body born out first meiotic division. You write further. Listen. At present, we are not very certain about this. Okay. The tertiary follicle further change into mature follicle or grafting follicle. The tertiary follicle further changes into
Tertiary follicle further changes. The tertiary follicle further changes into mature Graafian follicle. ये कौन सा स्लॉट है? वो कंप्लीट हो गया। ओके, थर्ड स्लॉट कंप्लीटेड। कोई 10 मिनट का ब्रेक लिख दो, मैं पिन कर दूंगी। New membrane called zona pellucida surrounding it. ये भी गया। 10 मिनट ब्रेक। ओके, थैंक यू। टाइप नहीं आएगा क्या? कैसे पिन करना है? वो रिप्लेस पिन मैसेज।
मर मर के आ गई फिर से। बोलो मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स। 30 साइकिल हटा, क्या लिख रहा है, कौन है? कल एक बंदा आके पूछ रहा था एक पीसीआर में कितने मिनट लगते हैं, देन आंसर दिया कि 30 साइकिल हटता है, और फिर मुझे कह रहा अच्छे से पढ़ो। अच्छा, तो मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ। कल एक इंसान आया था ना, उसका नाम ना मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक उसने बताया कि वो ना मेडिकल कॉलेज में है, मुंबई के किसी एक मेडिकल कॉलेज में है। तो उसने ऐसा बोला कि क्विज़ खेलते हैं। नहीं, अयान नहीं बोला पहले क्विज़ खेलते हैं ना, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं खेलना चाहती ना। तो वो बोला कि मैं खेल लेता हूँ अयान के साथ क्विज़। तो फिर अयान और वो लोग क्विज़ खेलने लगे ना। तो उसने बोला, एक क्वेश्चन पूछा अयान को। क्वेश्चन ये था कि पीसीआर में कितना टाइम लगता है। हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया था, वो बंदा ना पता नहीं उसके कोचिंग सेंटर में पढ़ाया होगा, तभी वो ऐसा बिहेव कर रहा था। आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत पूछ रहा था, तो उसने यही बोला टाइम कितना है बोला ना। अयान को आंसर नहीं पता था, तो अयान ने गूगल किया, उसको पता चल गया, क्योंकि गूगल करते वक्त हम लोग थोड़ा लेट आते हैं ना, इसलिए उसने अयान को बोला कि गूगल मत कर भाई। फिर अयान ने बोला कि अच्छा सॉरी ऐसा करके ना, तो फिर ये ठीक हो गया। उस अयान ने बोला था आंसर 8 मिनट, लेकिन उस बंदे ने बोला कि 8 मिनट नहीं, उसने पता नहीं कितना बोला, लेकिन मैं भूल गई। शॉर्ट 1 मिनट उसने टाइम दिया था, आई थिंक 60 मिनट समथिंग कुछ बोला, मैं भूल गई। उसने कुछ बोला था। अयान का आंसर मुझे पता है जो कि गलत है, 8 मिनट बोला ना। ये एनसीईआरटी में नहीं है और नीट के एस्पिरेंट को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा ना। दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा कि पीसीआर में कितने कॉपीज बनते हैं। तो मैंने बोला कि वो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया था, 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी बनता है। तुम लोग ने भी देखा होगा पीसीआर के वो डायग्राम है ना, वो वाले सेक्शन में। लेकिन अयान तब ना अपना माइंड लूज कर चुका था। आई थिंक अयान का ना ईगो हर्ट हुआ था तब तक।
तो अयान ने वो क्वेश्चन स्किप कर लिया। फिर उसे गुस्सा आया कि वो बोल रहा था कि कैसे 30 साइकिल ऐसे करके अयान ये करने लगा। अयान उसने क्वेश्चन पूछा था 30 साइकिल वाला भी, लेकिन तुमने ना तब तक तुम्हारा ईगो हर्ट हो चुका था, तुमने स्किप ही कर दिया था वो क्वेश्चन। और फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि वैबलर का स्पीसीज कौन सा होता है। अरे वो तो एनसीईआरटी में नहीं है। वैबलर्स हालांकि मेंशन किया है वो लास्ट वाले चैप्टर में, इकोलॉजी वाला है ना, उस पोर्शन में दिया है, लेकिन ना वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, तो उसमें स्पीसीज का ना नहीं बताया है। लेकिन आई थिंक पुराने पुराने क्वेश्चंस ना आते थे, तो उन लोगों के कोचिंग में पढ़ाया था, इसीलिए उसने पूछा था। फिर अयान को नहीं आया, फिर अयान को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा शायद मेरे सामने ना, इसलिए ऐसा हुआ। पता नहीं यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या था, लेकिन मैंने बता दिया हुआ सिचुएशन क्या है। मैं तो टाइप नहीं कर सकती ना, तुम लोग ही टाइप करो, मैं पिन कर देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसने 2 क्वेश्चन पूछा था। जो मिनट वाला था ना वो ठीक ही बोला था, लेकिन दूसरा वाला जो पीसीआर का कॉपी नंबर बताया था ना, उसमें साइकिल बोला था। इतना भी क्या ईगो यार भाई, और वो भी एक क्वेश्चन से क्या ही भाई, एग्जाम में क्रैक करके दिखा पहले। एक एक तो सभी भाई मैं तो कितनी गाली खाती हूँ यहाँ पर आके। वियर्ड यार वियर्ड। मुझे ना यहाँ पर यूट्यूब में से एलेक्स सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है याद है पता है? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। आई हेट दोज पीपल की जो इतू सा बात को लेके इतना भवंडर बनाते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही हूँ ना। इतू सा बात को पकड़ के ना इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, इतना वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, सब कुछ सोच लेती हूँ। इसलिए मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फोर्थ स्लॉट 4 लिख दो 60 मिनट करके। मैंने ऊपर का पढ़ा भी नहीं, लेकिन बस देने लग गई मैं भाषण। नो फोर्स, अरे कोई तो लिखो। ओके थैंक यू शुभम। भाषण देके थक ही गई, चाय पी लेती हूँ है ना। इतना अजीब लग रहा है। मैं लंच करके आई फिर बेचूंगी। नहीं ये स्लॉट कर लो सर्वजीता, वरना वैभव को बुरा लग जाएगा ना। ये स्लॉट कंप्लीट कर दो, फिर ना वो 10 मिनट ब्रेक में जाना खाना खाने के लिए। बैठो, नो बाई। कोई बाई नहीं बोलेगा सर्वजीता को, सब लोग बोलो कि पढ़ो। सर्वजीता यू विल स्टडी। कोई बोल के भी थक जाता है क्या? मैं थक जाती हूँ। At present, we are not very certain about this. The dorsally follicle further changes into the mature follicular graphene follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida.
tertiary follicle changes into the mature follicle or Graafian follicle. Juna pellucida. Graafian follicle, secondary oocytes. Graafian follicle, secondary oocytes. Juna pellucida. Juna pellucida. Pellucida. Juna pellucida. Ruptures and release the secondary oocyte ovum from the ovary. जाने कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला सरू सनम तेरी कसम है ना उस मूवी का नाम। मैं पढ़ते वक्त क्या क्या सोचती हूँ, मूवी भी सोचती हूँ। इंदर एंड सरू। देखा है किसी ने वो मूवी सनम तेरी कसम वाला? नहीं, ये वाला लाइव ना थोड़ा वो होगा, रात तक चलेगा क्योंकि वो आज क्लास नहीं है ना, संडे। आज संडे ही है ना, मैं तो संडे अज्यूम करके चल रही हूँ। हाँ, आज क्लासेस नहीं है, संडे क्लासेस नहीं होता।
मैं इतनी सुंदर सुंदर मैं इतना सुंदर सुंदर ड्राइंग बना रही हूँ ना ओवेरियन फॉलिकल का। देखो सुंदर सुंदर है ना। और जो उसने क्वेश्चन पूछा था यही था वो क्वेश्चन पूछने वाला अधर्व था। अभी नाम याद आया अधर्व। अयान तुम्हारा दुश्मन आ गया है, एनकाउंटर कर दो। अधर्व कल तुमने जो क्वेश्चन पूछा था ना उससे अयान का बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हुआ है। तुम आउट ऑफ एनसीईआरटी मत पूछना, ओके। आहा मेरा डेटा खत्म हो गया। Mature follicle or Graafian follicle, the secondary oocyte forms a new membrane called tuna, pellucida surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte. Graafian follicle ruptures. Graafian follicle ruptures. The Graafian follicle ruptures and to release the secondary oocyte's ovum. Oocytes. Ovum. From the ovary. प्राइमरी oocyte. आई थिंक प्राइमरी में तो एक मिनट डिप्लॉइड होता है क्या? एक मिनट चेक करके बताती हूँ। प्राइमरी oocyte, हाँ डिप्लॉइड। मैंने गलत कहा? नहीं कहा, सही कहा, ओके। तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं हो ना? तुम नीट एस्पिरेंट हो ना? वरना तुम मेडिकल कॉलेज में हो तो तुम्हें कैसे इतना सब कुछ पता रहेगा? भूल जाते हैं लोग। मैं अभी पढ़ती हूँ, रात को भूल जाती हूँ। New membrane called Jonah pellucida surrounding the Graafian follicle and ruptures to release secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation. हाँ अच्छा ठीक है, सही है फिर। The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation.
Okay, prophase 1, okay. Meiosis 1, prophase 1, Oogenesis starts division, enters prophase 1 of meiosis 1. Primary oocytes temporarily arrested, primary oocytes temporarily arrested, primary oocytes, granulosa cell, primary follicle. Large number of oogonia descend from birth to puberty. Birth to puberty. 60 to 80,000 primary follicle left at puberty. Each ovary, okay. Primary follicle plus more layer of granulosa cell. Primary follicle plus more layer of granulosa cell. Primary follicle plus more layer of granulosa. 60 to 80,000 primary. 60 to 80,000 primary follicle left in puberty in each ovary. Okay. That's for part time. Okay, that's for part time. Primary follicle plus more layer of granulosa cell. Primary follicle plus more layer of granulosa. Secondary follicle. Antrum fluid filled. Okay. Antrum fluid filled. Tertiary follicle. External outer theca, internal inner theca. Primary oocytes. Okay, then there is antrum, completes first meiotic division, tertiary follicle. Okay, completes first meiotic division, tertiary follicle. And this is the first meiotic division complete got this. Okay, tertiary follicle changes into grafting follicle. Tertiary follicle. Okay. Oogonia, mitosis differentiation, primary oocytes unsa. Okay, fetal life. Primary oocytes unsa. Prophase meiosis को prophase 1 मा गएर अरेस्ट हुन्छ cells. एउटा लेयर हुँदाखेरि के हुन्छ, ग्रानुलोसा सेलको लेयर हुँदाखेरि प्राइमरी फलिकल, थुप्रो ग्रानुलोसा सेलको थुप्रो लेयर आएपछि सेकेन्डरी, टर्सरीमा
fluid-filled antrum हुन्छ. Okay, antrum हुन्छ. अन्त डिफ्रेन्सिएट पनि हुन्छ फलिकल, यस फलिकल पनि आउटर थिका र इनर थिकामा, इन्टर्नल र एक्सटर्नलमा. ओके, त्यहाँदेखि एन्ट्रम त हुन्छ. प्राइमेरी साइड चाहिँ टर्सरी फलिकल बनिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो फेसमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लार्ज हुन्छ अनि फुल्ली डेभलप पनि हुन्छ, प्लस 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 कम्प्लिट फर्स्ट मियोटिक डिभिजन ग्रो गर्छ. यतिखेर भनौँ न, डेभलप होइन, ग्रो गर्न थाल्छ. अनि फर्स्ट मियोटिक डिभिजन चाहिँ कम्प्लिट गरिहाल्छ. फर्स्ट मियोटिक डिभिजन कम्प्लिटेड. फर्स्ट मियोटिक डिभिजन कम्प्लिटेड प्रायर टु ओभुलेसन. ओभुलेसन हुनुभन्दा अलिक अगाडि गर्छ. ओके, प्रायर टु ओभुलेसन, बर्थ, चाइल्डहुड, प्युबर्टी. सेकेन्डरी साइड टर्सरी फलिकल चेन्जेस ग्राफियन फलिकलमा हुन्छ. प्राइमेरी साइड. ओके, अनइक्वल डिभिजन हुन्छ. मियोटिक फर्स्ट मियोटिक डिभिजन हुन्छ. यसमा के हुन्छ, फर्स्ट मियोटिक डिभिजन कम्प्लिट प्रायर टु ओभुलेसन. ओके, फर्स्ट ओसाइट अनइक्वल डिभिजन, फर्स्ट मियोटिक डिभिजन. सेकेन्डरी ओसाइट भनिन्छ लार्ज हुन्छ, ह्याप्लोइड हो, लार्ज ह्याप्लोइड. सेकेन्डरी ओसाइट लार्ज ह्याप्लोइड एन्ड ओके, प्राइमरी ओसाइट 2 and 46. ओगोनिया पनि 46. ओके, सेकेन्डरी ओसाइट 23 हुन्छ, ह्याप्लोइड. सेकेन्डरी ओसाइट्स रिटेन बल्क अफ न्युट्रिएन्ट रिच साइटोप्लाज्म अफ प्राइमेरी ओसाइट्स. फर्स्ट पोलर बडी टाइनी हुन्छ, बर्न आउट अफ फर्स्ट मियोटिक, बर्न आउट अफ फर्स्ट मियोटिक डिभिजन, बर्न आउट अफ फर्स्ट मियोटिक डिभिजन, बर्न आउट अफ फर्स्ट मियोटिक डिभिजन. प्राइमेरी ओसाइट अनइक्वल डिभिजन, फर्स्ट मियोटिक डिभिजन, ग्राफियन फॉलिकल. Large haploid, secondary oocyte. Secondary oocytes. Secondary oocytes retain bulk of nutrient. Juna palisuda, graphian follicle for secondary oocytes. Ovulation. Menstruation cycle. Menstruation cycle बहुत irritating सा बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं. The process of formation of a mature female gametes is called oogenesis. Process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly. वैसे तो कुछ याद नहीं है. सपोर्ट कोर्स केमिस्ट्री वेट. भाई मैं चैट ऑफ करूं? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो तो कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? The process of formation of a mature female gamete is called. मैं चैट ऑफ कर देती हूँ अभी के लिए. ओके, वैसे तो ये तो अभी का ही है. ये लो कर दिया ऑफ. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell, oogonia. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage. During the embryonic development stage. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell, oogonia, are formed within each fetal ovary. Each fetal ovary
couple of million gamete mother cell, oogonia, are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. After birth, no more oogonia are formed and added. Okay. These cells starts division and enters into prophase 1. These cells starts division and enters into prophase 1 of the meiotic division. These cells starts division and enters into prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at that stage called primary oocyte. These cells start division and enters into prophase 1 of the meiotic division and gets primarily arrested at that stage called primary oocytes. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell. Start division and enters into a prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at that stage called primary oocytes. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. इसका primary follicle बन okay. A large number of granulosa cells and is called a large number of this surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle. A layer of granulosa cell and क्या पढ़ रही मैं इधर उधर देख रही हूँ. A large number of this follicle degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, primary follicle हो गया. A large number of this follicle degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage the primary oocytes within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting into the formation of large haploid secondary oocyte. Large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body and secondary oocyte. Haploid large, okay. Secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocytes. Secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocytes. Can you think of any other advantage for this? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into mature Graphian follicle. Tertiary follicle kinsa Graphian follicle. Second, okay, changes into follicle further changes into the mature follicle or Graphian follicle. Mature follicle or Graphian follicle. The secondary oocytes form a new membrane called new membrane called zona pellucida. Graphian follicle को बाहर पट्टी वाला बने दिखने वाले. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graphian follicle ruptures to release the secondary oocytes ovulation from the ovary by the process called ovulation. Graphian follicle plus zona pellucida. Second polar body अपनी बनी दस, okay. Second polar body. Menstrual cycle.
secondary oocyte र ovum के हुन्छ haploid हुन्छ 23 क्रोमोसोम है। इतना ज़्यादा नींद क्यों आ रही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कितना भयानक पोर्शन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primate, example monkey, apes and human beings, is called menstrual cycle. Reproductive cycle in female primate. Reproductive cycle of female primate means okay. Menstrual cycle, reproductive cycle, female primates, monkey, apes and human beings. Monkey, apes and human beings is called menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. First menstruation begins at puberty and is called menarche. First menstruation puberty मा हुन्छ त्यसलाई के भन्छ menarche भन्छ. In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. In human female, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days. Okay, menstruation कति बेला start हुन्छ, repeat हुन्छ, cycle continues हुन्छ 28 या फिर 29 days को बादमा. Okay, the first menstruation begins menarche at puberty. Menarche भन्छ menarche. Human female menstruation is repeated at an average interval. Average interval repeated. Menstruation repeated 28 to 29 days. At an average interval of 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. And the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. Menstrual cycle भन्छ for एउटा menstruation देखि अर्को menstruation अन्जेलसम्मको cycle लाई time लाग्यो. The event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. The ovum is released, ovulation, okay, ovulation. Ovum is released during the middle of each menstrual cycle. Ovum release in the middle of each menstrual cycle. One ovum is released. Euta ovum release हुन्छ. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. यहाँनिर कता हुन्छ ovulation भइरहेको छ. The major event of menstrual cycle are shown in figure 2.9. ये डायग्राम मुझे समझ में ही नहीं आता. डायग्राम यार मैं फीमेल होके भी नहीं समझ पा रही हूँ ये. Diagrammatic presentation of various events during a menstrual cycle. One ovum is released, ovulation during the middle of each menstrual cycle. The major event of menstrual cycle are shown in figure 2.9. Middle एकदम बीचों बीच मा के भन्छ 28 days भने 14 days को हुन्छ हैन. 14 to 15 भनौँ न मिडल. यार भाइ साहब 14 में तो साइकिल ओके. ये तो ना मैं खुद ही लिख देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 15 3 4 6 8 10 12 14 to 15 को बीच में 14 to 15 को बीच में between 14 and 15 ovulation 14 to 15 को बीच में होता है. The cycle starts within the menstrual. The cycle starts with the menstrual phase where the cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of uterus. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs. Menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Menstrual flow occurs 3 to 5 days. Menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form liquid
that comes out through vagina. Return of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid. That comes out through vagina. Menstruation. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may be caused due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. The menstrual phase is allowed by the follicular phase, followed by follicular phase. Okay. Poor health र stress को कारण गर्दा पनि हुन्छ abnormal. Menstrual phase is followed by follicular phase. Follicular phase. Okay, follicular phase. Menstrual phase. And its blood vessels, which forms liquid. Not fertilized. Ovum is not fertilized. Okay. Menstrual phase and follicular phase आउँछ के तर यो चाहिँ पर्ख ल middle of the menstrual cycle, isn't it? Cycle. Ovarian hormone ra ovarian events, pituitary hormone level, FSH. Menstruation follicular phase, follicular phase के अर्को नाम के हो proliferative phase. Follicular phase को अर्को नाम के हो proliferative phase. Proliferative phase कितना बकवास है ये, हाय इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. Okay, follicular phase मा के हुन्छ proliferative phase पनि भन्छ यसलाई. Okay, proliferative PF. Proliferative phase या फिर follicular phase. Menstruation, follicular phase, proliferative phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates.
अंधेरा कायम रहेगा। During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle. Primary follicle grow to become a fully mature Graafian follicle. Primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation. The endometrium of the uterus regenerate through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. The secretion of the gonadotropin, LH and FSH increase gradually during the follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle. Primary follicle, okay. Follicular phase में क्या आंसर? Developing follicle, mature follicle, okay. Primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. A cell proliferate करता, okay. Endometrium of uterus is regenerated by proliferation, okay. त्यसको कारण proliferative phase पनि भन्छ या फिर यसलाई follicular phase पनि भन्छ, किनकि the follicle primary follicle develop भएर mature Graafian follicle बनिन्छ. To become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. The change in the ovary and the uterus, are induced by the change in the levels of the pituitary and ovarian hormone. Ovarian hormones की क्या होना था? Estrogen र progesterone. Estrogen र progesterone ovarian hormone हो. Pituitary hormone के छ? LH र FSH. During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate through proliferation. नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, उबासी बोलते हैं ना हिंदी में, ये लेने का दिल कर रहा है, यान को क्या बोलते हैं? During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. This change in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone. Okay. The secretion of gonadotropins, LH and FSH, increase. Secretion of LH and FSH increase gradually during the follicular phase. Follicular phase में दुईटा increase हुन्छ, okay. The secretion of gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development, as well as secretion of estrogen by the growing follicles. Secretion of estrogen को secrete गर्छ, growing follicle secretes गर्छ, याद थिएन त मलाई त्यो त. Secretion of estrogen by growing follicle. Both LH and FSH action at peak level in the middle of the cycle. दुईटा के गर्छ? peak level मा जान्छ. In the middle of both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, about 14th day. 14th day, okay. FSH र LH दुईटा peak मा जान्छ. Okay, हाम्रोमा एउटा के हुन्छ भन्दा त मेन्स्ट्रुअल साइकल हुन्छ. साइकलको फर्स्ट फेजमा हामीलाई के बनाएको छ? मेन्स्ट्रुअल फेज बताएको छ कि जहाँनिर के हुन्छ? मेन्स्ट्रुअल फ्लो अकर गर्छ. यो 3 to 5 डेजसम्म आउन सक्छ. त्यहाँदेखि एन्डोमेट्रियम, युटेरसको एन्डोमेट्रियम ब्रेकडाउन भएको हुन्छ. यसमा ब्लड भेसल्सको कारणले गर्दा ब्लड आएको, त्यसबाट ब्लड हुन्छ, ओके. त्यहाँदेखि मेन्स्ट्रुअल फेजको बादमा हाम्रो एउटा हुन्छ प्रोलिफरेसन फेज भन्दा पनि भयो यसलाई, फलिकुलर फेज भन्दा पनि भयो. किन फलिकुलर फेज भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यहाँनिर प्राइमेरी फलिकल डेभलप भएर मच्योर ग्राफियन फलिकल बनिन्छ फलिकुलर फेजमा. या फिर यसलाई हामीले के भन्छ? या अल्लाह प्लिज हेल्प मी. फलिकुलर फेज भइगयो. त्यहाँदेखि
प्रोलिफरेटिभ फेज किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अघि ब्रेकडाउन भएको थियो एन्डोमेट्रियम, फेरि एन्डोमेट्रियम युटेरसको एन्डोमेट्रियम के गर्छ, रिजेनरेट हुन थाल्छ, त्यस कारण प्रोलिफरेटिभ भन्छ के। जब यो फेज चल्दै गर्छ त्यतिखेर के हुन्छ, गोनाडोट्रोफिन्स पनि के गर्दै हुन्छ, इन्क्रिज गर्दै गरेको हुन्छ अलङ विथ ओभेरियन हर्मोन। ओभेरियन हर्मोन दुईवटा छ, एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हो। पिट्युटरी हर्मोन पनि दुईटै छ, ल्युटेनाइजिङ हर्मोन र फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन हो के। These changes in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone. Primary follicle in the ovary grows to become a fully mature graphene follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus. These changes in the ovary and the uterus induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone. The secretion of gonadotropins, LH and FSH, luteinizing hormone and follicle hormone, increases gradually during the follicular phase. Follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. के गर्छ, जब फलिकल डेभलप गर्दै गर्छ त्यतिखेर चाहिँ दुईटै हर्मोन, ओभेरियन हर्मोन पनि अनि पिट्युटरी हर्मोन पनि इन्क्रिज हुन्छ। ल्युटेनाइजिङ र फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन इन्क्रिज हुन्छ। यसले के गर्छ, यो इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ यो हर्मोनको सिक्रेसनले चाहिँ ओभेरियन हर्मोन फलिकल डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ, जसले के गर्छ, डेभलप हुँदा हुँदै एस्ट्रोजेन पनि रिलिज गर्छ। follicle development, okay, increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development. How मलाई किन यस्तो डर लाग्दै इडी लागेको? The change in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone. Pituitary and levels of pituitary and ovarian hormone. The secretion of gonadotropin, LH, and follicle stimulating hormone increase gradually during the follicular phase. Increase gradually during the follicular phase. मैं तो मर जाऊंगी पढ़ते पढ़ते, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये चीज़, पता नहीं क्यों। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. These change in the ovary and the uterus are induced by change in the levels of pituitary and ovarian hormone. The secretion of gonadotropins, LH and FSH, increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. Both the LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, about 14 days. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle, called LH surge induced rupture. Like LH surge induced rupture of Graafian follicle. LH surge induced rupture of Graafian follicle. के भन्दो रहेछ यसलाई LH surge, okay, पिकमा जाँदाखेरि LH surge induced rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovulation. The ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining part of the Graafian follicle transform as corpus luteum, okay, developing corpus luteum, regressing corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone.
which is essential for the maintenance of the endometrium. The corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy. During pregnancy, progesterone large amount. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stops and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes disintegration of the endometrium, leading to the menstruation, making a new cycle. In human being, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche to menopause. Menstrual hygiene. Maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important. Take bath and clean yourself regularly. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. Dispose of the used sanitary napkin, properly wrapping it with a used paper. Do not throw the used napkins in the drain pipe of toilet or in the open area. After handling the napkin, wash hands with सोपी से हाथ धोना पड़ेगा उसके बाद. मत कीजिए दुआ. रफ कप कहाँ गया? भाई साहब, बुद्धि इतना है ना कि चीज़ें कहाँ रखती हूँ फिर भूल ही जाती हूँ. मंद बुद्धि. मेरे दिल को दुआ कीजिए. छिनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए. वाह वाह. DNA polymerase. Menstrual phase was MENSTURL, menstrual phase. Then follicular phase. Then follicular phase like even once or follicular proliferative proliferative phase. Okay. Menstrual phase, follicular phase or proliferative phase. Okay. Menstrual phase, follicular phase or proliferative phase. Okay. Menstrual phase, follicular phase or proliferative phase. Proliferation by आपको क्यों जाना था? Luteal phase. Luteal phase पनि हुन्छ नि luteal phase. Luteal phase just like even once a secretory phase or secretory phase. SECRETOR. Luteal phase or secretory phase. PHAC phase. Menstruation. Mensural. TSURL. Mensural phase. Menstrual phase, follicular phase, proliferative phase, and the luteal phase or secretory phase. Next cycle begins. Next. Menstrual phase much नहीं 3 to 5 days कौन हो सकते हैं 5 days कौन सा okay total
28 to 29 days को हुनसक्छ टोटल. ओके, यहाँदेखि या फिर एक साइकलदेखि दूसरे साइकलदेखि एक साइकलदेखि follicular phase मा के हुन्छ न development of primary follicle to mature Graafian follicle. Okay. यो कति दिनको हुन्छ? 14 दिनको हुन्छ. अप्रोक्सिमेटली 14 डेज. 14 डेजमा यहाँनिर के हुन्छ त ओभुलेसन हुन्छ यहाँनिर यो फेजमा. 14 डेजमा हुँदाखेरि के हुन्छ? ओभुलेसन. OVULATN ओभुलेसन. किन ओभुलेसन भएको भन्दाखेरि LH सर्ज. LH सर्ज SURG सर्ज. LH को पिक यस्तो जान्छ ऊपर. रप्चर अफ ग्राफियन फॉलिकल. LH सर्ज भएको कारणले गर्दाखेरि रप्चर अफ ग्राफियन फॉलिकल 14 डेजमा के डे 14 मा. प्राइमरी फॉलिकलदेखि मच्योर फॉलिकल हुन्छ डेभलपिङ फॉलिकल. डेभलपिङ फॉलिकलबाट के निक्लिन्छ? एस्ट्रोजन. त्यो ओभेरियन हो. ओभेरियन हर्मोन हो के एस्ट्रोजन. यहाँनिर के चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गरेको हुन्छ? बढ्दै गरेको हुन्छ. यहाँनिर हल्का यस्तो बिस्तारै बढ्दै गरेको हुन्छ. दुईटै FSH एन्ड LH दुईटै के गर्दै गरेको हुन्छ? बढ्दै गरेको हुन्छ. बोथ FSHN र LH दुईटै के गर्छ? इन्क्रिज गर्दै गरेको हुन्छ. दुईटाले के गर्छ? हेल्प्स इन डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ अफ फॉलिकल. 14 डेजमा ओभुलेसन हुन्छ. ओभुलेसन भएपछि के हुन्छ? ओभम रिलिज हुन्छ. ओभम रिलिज RELEASE रिलिज हुन्छ. त्यहाँदेखि फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल केमा कन्भर्ट हुन्छ? कर्पस ल्युटममा हुन्छ कि कर्पस ल्युटमले लार्ज अमाउन्टमा के गर्छ? प्रोजेस्टेरोन सिक्रिट गर्छ. प्रोजेस्टेरोन लार्ज अमाउन्टमा सिक्रिट गर्दाखेरि के हुन्छ? मेन्टेन गर्छ. यसले मेन्टेन्स एन्डोमेट्रियम. मेन्टेन्स एन्डोमेट्रियमलाई मेन्टेन्स गर्छ. जो चाहिँ के छ? नेसेसरी फर NECESSA नेसेसरी फर द इम्प्लान्टेसन. ओभम फर्टिलाइज छैन. ओभम नट फर्टिलाइज्ड. देन के हुन्छ? मेन्सुरल साइकल. ओभम फर्टिलाइज छैन भने मेन्सुरल साइकल. मेन्सुरल फेज स्टार्ट हुन्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ ओके ओभम नट फर्टिलाइज. कर्पस ल्युटम के हुन्छ? डिजेनरेट हुन्छ. डिजेनरेट एन्डोमेट्रियम के हुन्छ? ब्रेक्स. फेरि मेन्सुरल फेज स्टार्ट हुन्छ. ओके, यो फेरि अदर 14 डेज हो. अदर 14 डेजसम्म हुन्छ. फर्स्टमा कर्पस ल्युटम ठुलो हुन्छ. त्यहाँदेखि बादमा डिजेनरेट हुँदै जान्छ. यत्रो भएर सकिन्छ. प्रोजेस्टेरोन मेन्टेन गर्छ. छैन भने के हुन्छ?
Developing follicle, mature follicle, ovulation हुन्छ. Development of corpus luteum, regression corpus luteum, regressing corpus luteum, development of corpus luteum त्यहाँदेखि हुन्छ regression corpus luteum. प्रोजेस्टेरोन गर्दै जान्छ नि त, एस्ट्रोजन पनि गर्छ. युटेराइन इभेन्ट फेरि मेन्सुरेसन अकर हुन्छ. ओभेरियन हर्मोन दुईटा छ, एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन. ओभेरियन इभेन्ट, पिट्युटरी hormone level, FSH, LH, okay. 50 मा around period stop हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, menopause भन्छ human female मा चाहिँ, okay. Menarche, cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche to menopause. The reproductive cycle in the female primate, example monkey, apes and human beings, is called menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. The cycle of event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. One ovum is released. Euta ovum is released during ovulation. Released ovulation during the middle of each menstrual cycle. The major event of menstrual cycle are shown in figure 2.9. Schematic representation of various events during a menstrual cycle. Menstruation, follicular phase, proliferative phase, luteal phase, secretory phase. Next cycle begins. Uterus event, menses. Okay. त्यहाँदेखि development of endometrium, फेरि breakdown हुन्छ. Progesterone र estrogens increase गर्छ. Ovulation मा एकदमै के हुन्छ, मजाले increase हुन्छ estrogen चाहिँ, किनकि developing follicle ले के गर्छ, LH surge. Developing follicle, mature follicle, ovulation. त्यसको बादमा के हुन्छ, developing corpus luteum, progesterone increase हुन्छ. Progesterone, regression of corpus luteum. It begins. The cycle starts with the menstrual phase, when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone. The secretion of gonadotrophin, LH and FSH, increases gradually during the follicular phase and simultaneously follicular event, as well as secretion of estrogen by growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, about 14th day. Rapid secretion of LH leading to the maximum level during the mid-cycle, called LH surge, induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, ovulation. The ovum ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining part of the Graafian follicle transformed as the corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential
for maintenance of the endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stops. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stops and there is no menstruation. During menstruation. स्लॉट 4 कंप्लीट करके कोई लिख दो भाई. मैं इतना डार्क हो गया है ये रूम. एक मिनट कैंडल जला लेती हूँ ना. मुझे दिख रहा है वैसे. कैंडल के नाम पे बिना कैंडल ही नहीं है. ये तो खत्म हो. आई डोंट थिंक बाकी कैंडल होगा घर पे. वो कोई नहीं लिख सकता ना. मैंने यहाँ पर ये ऑफ कर दिया है. लो अब लिख दो. मैं पिन कर दूंगी. आई थिंक चार्ज भी तो नहीं होगा. 33% ही है. चार्ज भी नहीं है. Because the elements of large amount of resistance. All events of the menstrual cycle stops and there is no menstruation. Menstruation बोला था ना. ये खत्म हो गया है. गिर जाएगा यहाँ से. आई थिंक ये भी जल गया है थोड़ा. Discuss this integration of the endometrium leading to menstruation. Menarche and menopause. ये तो हो ही जाएगा. इसको भी रिवाइज कर लेती हूँ साथ साथ में. कर पाती तो बहुत अच्छा होता. बहुत अच्छा. गुड आफ्टरनून प्रीति. यार कैंडल ही नहीं है. मैं कहाँ से लाऊंगी. दुकान से ले लाना पड़ेगा. लेकिन दुकान जाने का दिल ही नहीं है मेरा. तो यहाँ पर है. चेक कर लेती हूँ. ओके नहीं है. यहाँ पर भी हो सकता है कभी कभी. नहीं है. रखा होता तो होता ना. रखा ही नहीं है कैंडल और ढूंढ रही हूँ कैंडल. रुको. मिला थोड़ा सा मिला. थोड़ा सा कैंडल मिला. इतू सा मिला. कैन यू सी. इतू सा मिला. कोई लिखो ना ब्रेक करके. मैं नहीं लिख सकती अभी. मेरे लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया है ना. स्विच ऑफ शट डाउन. पता नहीं क्या. चार्ज खत्म हो गया है. इसके ऊपर नहीं रख सकते. इसके ऊपर छोड़ दो. इसके ऊपर रख देते हैं. हाँ लिखो ना. हो कोई 10 मिनट ब्रेक करके. मैं पिन कर लेती हूँ. या फिर अभी भी ऑफ है. लिखा है तो मेरा ही ये ना पॉज हो गया था. सॉरी भाई सब सॉरी.
टेंग 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 टेंग। मैं तो लंबा वाला ब्रेक लूंगी। 4th स्लॉट कंप्लीट हो गया है ना ये वाला। ये लो 21 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। इतना मिनट से 4 स्लॉट कंप्लीट किया है। वैसे 5 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद ही 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए था, या फिर 1 आवर जीतने का एक ही बार में। लाइट क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्या पता। एक दो तीन चार पाँच छः। पता नहीं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्या देखता रहता है। बड़ी बड़ी गई बा, बस तो फिर अगला मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए।
मेरा कैंडल खत्म होगा शायद। कैंडल को ऑफ कर दूं, लेकिन फिर अंधेरा हो जाएगा। आता हूँ बना कर, कॉफ़ी बनाकर, और मैं भी कुछ खाऊंगी। अभी भी 13 मिनट बचा है। फ्राइड राइस खाऊंगी शायद, मुझे भी भूख लग रहा है। मेरे पास ये लास्ट टुकड़ा बचा है कैंडल का, इतना सही है। कैन यू सी, इतना सा बचा है। तो इसको मैं क्या क्या कर दूँ, मार दूँ? जब पढ़ते हैं ना तब के लिए बचा के रखते हैं। अभी तो मेरा कैंडल वेस्ट हो रहा है। वैसे मैं दुकान दुकान जा सकती हूँ, वहाँ से लेके आ सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने का मन नहीं है। तुम 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 तुम। See, this is what happened whenever I open my door. That's why I always close my door. Imposter invaded. लग रहा है आज सनराइज हुआ है और सुबह सुबह पढ़ रहे हो। कौन रो रहा है? नीबर के बच्चे। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं।
मैंने कितना अच्छा बनाया है, गोल मटोल। सी 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 सी, अच्छे से देखो ना, कितना प्यारा बनाया है ना। लुक, देखो देखो, दूर से अच्छे से देखो, अच्छा लग रहा है ना। ऑमलेट तो नहीं है, आई थिंक इसको सनी साइड ऑफ एग समथिंग कुछ बोलता है, लेकिन मैंने ना इसका यॉक ही फोड़ दिया तो एकदम यॉक इधर उधर हो गया है। मेजोरिटी नीट के ही है, लेकिन सारे नहीं है। कितना टेस्टी था यार, करने का दिल किया, ऐसा करने का, बहुत टेस्टी। ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने। हो, अभी भी 2 मिनट बचे हैं। अच्छा,
तो ऐसे ही ये कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट कर लेती हूँ। चेन्नई मेरे दिल की दुआ कीजिए, दिल को। हाँ आज नहीं है, आज संडे है ना, सुंडे है आज, सुंडे। सुंडे इज ऑल फुंडे। गॉड प्लीज। तुम लोगों के स्कूल में ये प्रेयर होता था क्या? ओ गॉड गाइड मी, प्रोटेक्ट मी वाला। ओ गॉड गाइड मी। इवनिंग में हम लोगों के ना असेंबली होता था, मॉर्निंग में भी असेंबली होता था, इवनिंग में भी होता था घर आने से पहले। इसलिए हम लोग हमेशा यही प्रेयर करते थे, क्योंकि ये शॉर्ट था ना, ओ गॉड गाइड मी वाला। जल्दी जल्दी करके भाग जाते थे। लाइक आई थिंक टीचर्स भी यही चाहते थे, हेडमास्टर को छोड़ के। हर कोई आके ज्ञान क्यों फेंकता है? मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का ज्ञान लेने में। अगर ज्ञान ऐसा हो ना जो तुम्हें ना पता हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है, और फिर भी वो लोग आके ज्ञान फेंक के जाते हैं मुंह पे ठे करके। क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों को? नमस्कार करो। रियली?
सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में। सर्वजीता मैं तो रोज रहती हूँ ना, तुम ही चली जाती हो। हम लोग रहते हैं तो तुम मत जाना। हाँ पता नहीं क्या क्या मन में सवाल ही आ रहे हैं। सवाल ही, हाँ सवाल ही, सवाल आ रहे हैं। किसी ने ना रियल फ्रेंड सुना है? भाई किसी ने रियल फ्रेंड सुना है सॉन्ग? आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम रियल फ्रेंड्स, ये वाला गाना किसी ने सुना है? जब तक ब्रेक तब ऑन कर देना। वही जब सेशन स्टार्ट करोगी तब म्यूट कर देना। क्या म्यूट करना है? ये 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 म्यूट कर दूं कि क्या म्यूट करूं? ये म्यूट करना है, क्यों? फिर मैं बोल कैसे पाऊंगी? दिमाग स्टार्ट करने के मूड में नहीं है आज। चल 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 छापड़ी, अभी स्टार्ट कर दूंगी तेरे मुंह के सामने। सागर को गाली देके इतना सुकून आया ना, क्या ही बोलूं। ऑक्सीजन की पूरी ऐसा लग रहा है कि पूरा रूम ही रूम ना ऑक्सीजन से ही फिल हो गया है। अगर रूम नहीं फिल हुआ तो एटलीस्ट मेरा लंग्स तो फिल हो गया होगा। दो चार लोगों को गाली देके खुशी हो जाती हूँ। ओके तो मैं ये ऑफ कर दी।
I said hi, Alex. तुम दोनों को ना मैं ऐसे ही गे नहीं बोलती, शुभम और एलेक्स। एक बोल रहा है एलेक्सा, दूसरा बोल रहा है बॉसवा। भाई साहब, इन लोगों का मैं क्या करूं? एलेक्स, मेरी आवाज आ रही है? इसको समझाओ तो थोड़ा अपने तुम्हारे लैंग्वेज में। जिसको कोई नहीं समझा पाता ना, वो उसको ना एलेक्स समझा पाता है। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा पुराना डायलॉग, विवाद हो जाएगा। कर तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ बोलते रहते ना, विवाद हो जाएगा। मैं एक बार राइस देख के आती हूँ। थैंक यू सर। एलेक्स ना लड़ाई करने वाला जैसा तुम्हें लगता है, सबसे पहले यही भागेगा अगर हुआ भी तो। और कल ना जोक करेगा। पहले पहले भागेगा, और कौन कौन मार खाया उसके ऊपर ना वो जोक करके हंसेगा। मैंने जिंदगी में एलेक्स से ज्यादा फट्टू इंसान कहीं नहीं देखा है।
इतना ज्यादा फेंक के बोल रहा है कि इस बात का घमंड नहीं किया। घमंड करता है तभी तो तुमने फेंका ना, इतना लंबा लंबा फेंका वो भी। फेंको, मुझे मेरे टीममेट की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। वी आर ऑन द सेम टीम ना, इसलिए। उल्टा कर दिया मैंने। आज अम्मा को आने में टाइम क्यों लग रहा है? इतना ज्यादा गर्मी। -4 डिग्री सेल्सियस, ओके। Am I visible? Am I visible? कोई तो बोलो, am I visible? हाय अशोक निगम, सोनू निगम। आई थिंक मेरी अम्मा आई है, ऊपर बकवास कर रही है लोगों के साथ मिलके। क्यों जाती है वहां पर, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे उनका आवाज बार बार आ रहा है।
बात कर लिया अच्छे से अशोक निगम. गुड जॉब एलेक्स. We did a damn good job. Thank you, God. Who knows? इतनी लंबी इंसान हूँ मैं, लंबी इंसान हूँ मैं, लंबी. कंटिन्यू करें. लगता है मैं मैथ के स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे भी नहीं पता है ना. मैं इसको साफ कर लूँ एक बार. अब ये आज पनि ढिलो आएछ. अझै उनी तल होला दिपकको भएर त नि. सजा छ 5 बजी उता छुट्टी भएर त्यत्रो बाटो आउँदा त्यो मेरो धुको लुगा हो के गरेको. खानेकुरा नै केही पनि छैन. अन्डा खानु भने दाल पनि छ त, आम पनि छ, चिया पनि छ. थाहा सुत्नु न सुत्नु, यहाँ सुत्नु. खुट्टा नि दुख्यो होला हो. अब बोक्दिनँ भन्नुपर्छ नि. ओह्रालोमा सक्दिनँ भन्नु पर्दैन. खलाल गुर्जीको त्यहाँनिर होइन नि. ए हो. एक 40 मिनट पो लागेछ त नि. झनै 1 घन्टा लागेछ. होइन आमाको खुट्टा दुखेछ र आमा ढिलो हिँड्ने होला हौ. खोलाको बाटो आयो उगासी रोडको बाटो. ए हो. खोलाको भन्दा बरु रोडकै बाटो सिधा छ ओह्रालो र
ओह्रालेर उक्कालो छ किन झरेको नि आमा कस्तो भुसुडी न भुसुडी देखिरहेको छ सुत्नु यहाँ कस्तो हुन्छ छोडी त काम गरेर आएको यहाँ आउनु न चिया छ भने सबै खान्छु आमाको डल्ले भएर आएको त छ भ्यानको देखाएको छैन गरम आज है खान्छ गरम त छ अब फिर जैसे दिख रहे हैं ओए कौन पूछ रहा था किसने भगा दिया अयान अयान हमेशा गलत इंसान को डिलीट करता है ओए तू अम्मा के बारे में पूछ रहा था ना ये देख आई लिव विद माई पेरेंट्स वो हाई बोल रही है देख लिया आई डोंट नो योर नेम लेकिन तुम्हारा कुछ है उर्दू में है ना या फिर अरबिक में तो आई लिव विद माई मदर खालु उसको खालु चाहिँ के हो खालु भनेको नि आमाको बहिनी खला हो खला खालु खाला खालु भन्छ नि के भनेपछि भेनाला होला हौ खालु चाइनलको खालु चाइनलको खालु नि है छ्यामालाई नै खालु खाली भन्छ होला किनभने छ्यामा नै भन्छ अयो खालु चाइनलको खालु कैमरा घुमा दो मतलब कि अम्मा की तरफ करना है होती गई कौन सा लैंग्वेज है नेपाली तुम्हारा हिंदी लैंग्वेज नहीं है क्या मदर टंग हिंदी नहीं है मेरा ये तो हम लोग स्कूल में सीखे हैं अयान का पोस्ट में तो ना अयान ने मुझे ना इतना वो किया है ना कि अब मैं किसी को मॉडरेटर नहीं बनाऊंगी इतना तकलीफ दिया है ना इसलिए जितना मॉडरेटर पहले थे ना उतना ही होगा अयान को थोड़ा नोटिस करेंगे अगर निकालना हो तो निकाल देंगे ब्लू टिक ले लेंगे ओके लेकिन अभी मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि एक बार दे दिया है तो किसी को अगर तुम गिफ्ट देते हो तो छीन लेते हो नहीं ना इसलिए मैं नहीं ले सकती लेकिन मैं दूसरा नहीं चाहती वैसे तो मैं ना आई थिंक हिज नेम इज निमेश समथिंग कुछ तो था आई डोंट नो हिज नेम बट उसको हम लोग निश बुलाते हैं निश को मैं ना मॉडरेटर बनाना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि अयान ने इतना परेशान करके रखा है ना नाक पे दम करके रखा है वे दे टेक a mock test डार्विन पर शुभम और ना एलेक्स शायद मेरे साथ ना बहुत पहले से थे ना शायद इसलिए स्पेशली शुभम इसको तो शुभम को पता होता है कि कौन सी बात मुझे हर्ट करती है और कौन सी नहीं करती है तो एकदम सही तरीके से करता है शुभम लाइक सिलेक्ट करता है तो इसीलिए मुझे शुभम के साथ ना थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और हमेशा हर सेशन में शुभम शुभम करती हूँ और इसके लिए ना ये शुभम भाव भी खाता है बिना बताए ही सेशन छोड़ के चला जाता है हाई मोमेंटम P equals to mv
Oh God. You did a damn good job. मैं ये सेशन ऑफ करके चली जाऊंगी, अब मुझे पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है ना, हम लोगों ने शायद लंबा ब्रेक ले लिया। मैं बाद में आऊँ? हाँ JJM, सही बोला तुमने। नहीं हो रही है ना पढ़ाई।
Am I visible? 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 Up the visible, down visible. Okay. Rich kids have it easy. है ना?
कंप्लीट हो गया के? ये कौन सा स्लॉट था? स्लॉट 5 कंप्लीट हो गया के?
इतना हैवी फील कर रही हूँ, ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं? किताब के सामने बैठा डजंट मीन कि पढ़ रहे हो, दिमाग में भी तो जाना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, पता नहीं क्यों। ओए पढ़ो ना। 7:30 ये स्लॉट कंप्लीट हो गया तो फिफ्थ स्लॉट ना मैं लाइक 45 मिनट ही बचा था, आगे ही 15 मिनट जितना करके रखा था। वैसे मुझे पढ़ना चाहिए यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। इट्स ओके। पढ़ना कितना मुश्किल होता है यार। अभी शायद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा फ्रेश होके ना आती हूँ। सर्वजीता भी आएगी, बोलने वाली थी, सर्वजीता आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ना लाइव सेशन ऑफ करके ना रिफ्रेश होके आती हूँ। ओके बाय। रियल फ्रेंड्स सुन लो, मोटिवेशन आ जाएगा। नहीं उससे नहीं आएगा। उससे एक कांड हुआ था, वो तो मैंने तुम लोगों को ऐसे ही बता दिया। उससे तो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊंगी शायद। बस सही है फिर तो तुम्हारा, पढ़ते हो। मौत आ जाती है पढ़ते पढ़ते। मैं चली जाती हूँ। ओके मुझे वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है।